Check, hello. Yes. Guys, are we ready? Good. Yes, very good morning, my dear friends. Guys, good morning. Wonderful, come on. So friends, we are done with discussion about the first chapter, that is Introduction to Income Tax, where not just basics of income tax, but we have also learned a lot of interesting points about the tax rates in income tax, especially about default tax regime, optional tax regime. We understood some special rates of tax given in 112, 112A, 111A. We spoke about 115BB, 115BBJ, 115BBE. A lot of interesting points we have covered there. I hope we are strongly clear with that, everybody. Good. What is section 27 beta? Assessee 29. Excellent. 225A. India 231. Person 234 beta. Previous year. Section 3. Section 4. What does chargeability section say? Income earned by an assessee during the previous year is chargeable to tax in assessment year. How many exceptions are there? 5. What are those 5? Shipping business of non-resident, section 172. Then person living in India permanently or for a long time, section 174. AOP, BOI, AJP, formed for short duration or purpose, section 174A. 175, persons likely to transfer property to avoid tax. 176, discontinued business. Correct, no, my dear friends? What is section 87A? Rebate. What is section 288A beta? Rounding off of income. 288B, rounding off of tax payable, will round off nearest multiple of 10 rupees. Correct, no friends? चलो rebate का क्या सीन है? In case of optional tax regime, rebate is applicable only to those whose total income does not exceed 5 lakhs. कितना बेटा rebate? Tax payable or 12,500, whichever is lower. बराबर है ना? Next, what is the story in case of default tax regime, whose total income does not exceed 7 lakhs? Tax payable or 25,000, whichever is lower. किधर खो गए भाई? किसके ख्यालों में? सुबह सुबह किसी का याद आया क्या? मतलब कहीं तो खो गए, सोच रहे यार ऐसा उस दिन क्यों ऐसा हो गया? किधर है भाई? Come on, get back. So clear with that, everybody? What is section 115BBE beta? नहीं यार. Unexplained incomes, unexplained investments, unexplained expenditure, all these cases tax rate क्या है बेटा? 60% plus surcharge 25% plus HEC 4%, effective rate 78%. अरे कल बताया ना बेटा आपको मैंने. गुड. अभी मुझे एक चीज बताओ, कल अपना आधा से ज्यादा लेक्चर सरचार्ज में चले गया. अब आप मुझे बोलो सरचार्ज में फुल क्लैरिटी है क्या? डिफॉल्ट में क्या क्या सीन है? 10, 15, 25, 37. Default it is only 10, 15, 25. But to be kept in mind very clearly that in case of dividends and capital gain, 25 cannot come into picture. Maximum is only 15%. Solve करें क्वेश्चन अपन. Optional में क्या सीन है? 10, 15, 25, 37. But for dividend and capital gains, 25, 37 will not come into picture. Maximum is 15. Correct, no? Madam, where are you? Here only? No, physically here I am able to see, but mentally where? That is a question. अरे कभी कभी ऐसा जोन आउट हो जाते क्या आप लोग 2-3 मिनट के लिए बीच में, अचानक सोच रहे 87 है रिबेट, उसके बाद काश ऐसा होता क्या? Guys, please stay focused. Don't get lost sometimes in between. I'm revising, that's okay for 2 minutes चलता है, but when I'm teaching concept that time, if you are zoned out for 2 minutes, then gone. And that 2 minutes can make a difference in 1 mark. And we already know very clearly, it's not 1 mark, it is. Every mark will make a difference. Clear, no? I already gave a lot of examples to you what has happened practically. एक मार्क से वो कितना फर्क पड़ता है पता है आपको clearly. ठीक है ना? Everyone? Done. So we have successfully completed only, no? Thank you so much. We have successfully completed first chapter, that is Introduction to Income Tax. Today we'll start discussion about the second chapter, that is about residential status. So name only says, what is that word, sir? Residential status. Clear, my dear friends? I've created a separate document for chapter 1. Now chapter 2, I'm sharing a separate document. I'll share the first chapter notes in the WhatsApp group.
ठीक है, by chance if somebody has missed out something, you can take from there. ठीक है ना? क्या हो गया यार आपको सुबह सुबह? ठीक है क्या? Thank you so much. Let us start the discussion about Unit 2, that is about residential status and scope of total income. कितने प्रॉब्लम्स है यार लाइफ में. कभी फैन चाहिए, कभी फैन नहीं चाहिए, कभी एसी चाहिए, कभी एसी नहीं चाहिए, कभी कोई पसंद आता है उसके बाद कोई और पसंद आता है, और कभी कोई पसंद आए उनको गर्लफ्रेंड बना दी उसके बाद कोई और पसंद आए. क्या करें अभी? ब्रेकअप. कितना इजी सॉल्यूशन है ना आपके पास. चलो, let's talk about Unit 2, residential status and scope of total income. And let me tell you very clearly, almost every time a question is coming in the exam from this chapter. Almost. मतलब लास्ट 5 साल में 10 पेपर हुआ है, 10 पेपर में 8 पेपर में एग्जाम में क्वेश्चन है. और बाकी 2 अटेम्प्ट में क्यों नहीं आया पूछ रहे आप. बाकी 2 अटेम्प्ट में 2 मार्क का क्वेश्चन आया, वरना हर बार 4 मार्क का क्वेश्चन आता है इसमें से. समझ रहे क्या? So you have to understand that this topic is very important from an examination standpoint and also from a very, very practical standpoint. Practically भी exam point of view, दोनों point of view में ये chapter बहुत important है. Are you ready everybody? Can I start the discussion? So next for half an hour, 45 minutes, just relax and listen and focus. After that we'll start writing. Clear? First of all, what is the meaning of the word? What is the meaning of the word status? Shubham? Single or committed? Breakup? How many times? क्या था वो? चलो बेटा, what does status mean? There are different meanings of this word called status. One word is could be WhatsApp status. Wow. And one more interesting point is status is married or single, committed or single. Wonderful. Next, one more possibility. People also use this word status for telling what is your status. अपनी क्या बोलते हैं, अपनी औकात क्या है? Status. Correct, no friends? But the point to be noted is that under income tax, we are trying to find out something called residential status. What status, beta? Residential status. Now, first of all, before understanding what is the meaning of residential status, first let me teach you why it is important to understand residential status. Clear है ना बेटा? उसके बाद अपने को समझ में आएगा ये टॉपिक अपन क्यों पढ़ रहे. Clear है? Sir, let us say I love one cricket player. I'll take his name only. You know him? From which country? Australia. Oh my God. Which country, beta? Exactly. Kane Williamson from New Zealand. One of the finest player. आपको अच्छा लगा नाम? चेंज करूँ क्या? अब नेक्स्ट ठीक है भाई, चेंज कर देता. सब चेहरा मत बनाओ आप. अब नेक्स्ट मैं नाम लिखूंगा, वो चेंज करो बोले तो मैं चेंज नहीं करूंगा. There is somebody called ABD. कौन है ABD? AB de Villiers. Thank you so much. Which country? Wonderful. He is a South African cricket player. Correct, my dear friends? Beta bolo. Now what has happened is, this South African cricket player, he has come to India. He has come to India. And after coming to India, he made money in India. He made money in India. How can he make money in India? Example. एक तो IPL मैच खेल के बहुत पैसे कमा रहे हैं आजकल ये लोग. IPL became a very big business nowadays. That is one possibility. Second, acting in advertisement. Correct, no? Acting in advertisements. Money is coming. They are acting as brand ambassadors. Correct, my dear friends? Now, what do you think? They are coming to India, playing a match in India, or participating in some activity in India, or acting as a brand ambassador in India, or doing some kind of activity in India and making money in India. Now my question to you, do you think they should pay tax in India? Speak out. Everyone said. But now the question comes. He is basically a South African guy
who is coming to India, making money in India. Indian government is telling pay tax in India. South African government is telling pay tax in South Africa. But do you really think a person will pay tax in two countries? Speak out, guys. दोनों कंट्री में टैक्स पे करना पड़ेगा? Yes बोल रही कोई? How can a person pay tax in two countries, boss? That is ridiculous. A tax cannot be taken twice, telling that you are from this country, you pay tax here. You made money in my country, you pay tax here. हो गया फिर. So you're getting what I'm saying, everybody? All of us. So there is no question of paying tax in two countries. That question is ruled out. Now, which country you'll pay tax? Practically, there is one very, very interesting concept called DTAA, which stands for Double Taxation Avoidance Agreement. I repeat once again, my dear friends. क्या नाम है बेटा उसका? Double Taxation Avoidance Agreement. India has signed agreement with more than 150 plus countries telling that ये income पे आप tax ले लो, ये income पे हम tax ले लेंगे. Like that they signed agreement with more than 150 plus countries. What is the agreement they have signed? Double Taxation Avoidance Agreement. This agreement what India has signed with lot of countries across the world. You're getting what I'm saying? But this DTAA part is not there for you at CA inter level, but this DTAA part is there for you at CA final level. फाइनल लेवल में आप पढ़ने वाले. DTAA है तो क्या होगा, DTAA नहीं है तो क्या होगा, वो सब फाइनल में आ जाएगा. But now comes the real question. Think properly and give an answer. This South African cricket player is coming to India all the way from South Africa, making money in India, either by advertisement or by brand ambassador or by playing a match in India. Whatever means it is, he is making money in India. And I asked you a question, should he pay tax in India? You guys have directly told the answer, yes sir, he should pay tax in India because he is making money in India. That was your answer. Everyone. But now my question. This South African cricket player, he went to New Zealand. You're getting what I'm questioning? Sir, the South African cricket player, where did he go? New Zealand. South African cricket player went to New Zealand to play a match in New Zealand. Once again, I repeat, South African cricket player went to New Zealand to play a match in New Zealand, made money in New Zealand. Made money in? Indian government is calling and telling, please pay tax in India. चलेगा क्या? चप्पल लेके मारेगा वो. समझ रहे क्या मेरी बात? सर लॉजिक सिंपल है. सर फॉरेन का बंदा है, वो इंडिया में आके पैसा कमा रहा है, आप बोल रहे इंडिया में टैक्स भरो, कुछ तो सेंस बन रहा है उसमें. अरे फॉरेन का बंदा है, फॉरेन में जाके पैसा कमा रहा है, तू कौन है यार फोन करके टैक्स पूछने वाला? यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? नो. A South African guy going to New Zealand making money in New Zealand, Indian government cannot demand him telling pay tax in India for the income made in New Zealand. Getting what I'm saying, my dear friends? But when I say South African guy, American guy, foreign guy, all that words are all lame language. They are all local language. Income tax is all that is bullshit. We will tell you something called residential status. Whether you are a resident or you are a non-resident, that we will tell some criteria. If that criteria is satisfied, you are a resident. If the criteria is not satisfied, you are a non-resident. If you are a resident, wherever you go, we will follow. If you are a non-resident, we will catch you only when you make money in India. अरे समझ रहे क्या मेरी बात? Now let me talk in different language. Assume for a second, A.B. de Villiers, South African guy, did not satisfy the condition. Did not satisfy the condition. What is the condition? I will tell. Don't worry. He did not satisfy the condition. If condition is not satisfied, what will he become? Non-resident. What is the condition? We'll learn. In 5 minutes, I'll start. What will he become? Non-resident. This non-resident came to India, made money in India. Should he pay tax in India? Yes. But this non-resident A.B. de Villiers, he went to Australia, made money in Australia. Should he pay tax in India? Exactly. Next question. Assume for a second, this A.B. de Villiers has satisfied the conditions given in income tax and he became a resident. And he became a resident. He came to India, made money in India. Should he pay tax in India? Answer is yes. He went to Australia, made money in Australia. Should he pay tax in India? Again the answer is yes. अरे समझे क्या मेरी बात? वापस बोलूं क्या लास्ट लाइन?
सुनो वापस बोलता मैं. AB de Villiers, assume for a second he is a resident. Student is asking, sir, how? By satisfying condition. What is that, sir? Wait 5 minutes. Correct, my dear friends? कुछ तो कंडीशन है इनकम टैक्स में, वो सेटिस्फाई करके ये भाई साहब क्या बने बेटा? रेसिडेंट. वो इंडिया में आके पैसा कमा रहा है. इंडिया में जो पैसा कमाए उस पर टैक्स भरना है क्या? यस. बट ये ऑस्ट्रेलिया जाके वहां पे पैसा कमाए, वो इनकम पे इंडिया में टैक्स भरना है क्या? आंसर इज यस. अरे वही तो बोल रहा ना यार मैं, यस, बिकॉज इज ए रेसिडेंट. So what I'm trying to tell you is that if a person is a resident, what is taxable will be different. If a person is a non-resident, what will taxable will be different. समझे क्या बेटा? अभी एबी डिविलियर्स का कहानी है. 2 मिनट, we will keep him aside. Take an example. Shiva Teja. Okay? Whatever conditions I'll tell you now, I satisfy the conditions. Okay? You will only tell how. आप सब लोग भी रेसिडेंट है. कैसे मैं बताऊंगा अभी. ठीक है? I satisfy the condition and I am what? Resident. Speak out. I am doing some activity in Pune and I am making money in Pune. Okay? Should I pay tax in India? Speak out. 100% answer is yes. Now let us say I went to US. I went to US, done some activity in US, made some money in US. Made some money in US. पैसे कहां पे कमाए मैंने? US. काम कहां पे किया? काम कहां पे किया मैंने? यूएस. पैसे कमाए किधर? यूएस. शुड आई पे टैक्स इन इंडिया? 100% आंसर इज यस, बिकॉज आई एम ए रेसिडेंट इन इंडिया. अगर मैं नॉन रेसिडेंट होता तो यूएस का इनकम इधर टैक्स नहीं करेंगे. गेटिंग माई पॉइंट? आपको वापस डाउट आ सकता है, सर आपने अभी 2 मिनट पहले बताया आपने यूएस जाके पैसे कमाए एंड यू आर टेलिंग दैट यू विल पे टैक्स इन इंडिया. बट प्रैक्टिकली ये भी तो प्रॉब्लम है, यूएस वाला भी बोलेगा कि इधर भी टैक्स पे करो. बट ये तो क्लियर बोल दे मैं आपको 2 जगह टैक्स पे नहीं करते, एक ही कंट्री में पे करेंगे. कौन सी कंट्री में पे करेंगे सर? दैट इज डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट व्हिच इज नॉट देयर एट सीए इंटर लेवल. सीए इंटर में आपको यही पूछेंगे इंडिया में टैक्सेबल है या नहीं. अगर रेसिडेंट है तो अपने को बोलना है. अगर नॉन रेसिडेंट है तो नहीं. समझा क्या? बोलो बेटा. स्पीक आउट एवरीवन सर, ऑल ऑफ अस. Sure? One more interesting point. So let us say there is one person, Mr. A. Mr. A. He is a resident or non-resident, I will not tell. But you tell me the answer. Okay? Mr. A is in India. He has done some activity in India, made some money in India. Should he pay tax in India if he is a resident? Yes. Should he pay tax in India if he is a non-resident? That's it. I think you got the logic now. मतलब अगर इंडिया में पैसे कमाए भाई तो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, टैक्स भरो चुपचाप. अगर नॉन रेसिडेंट है तो फर्क किधर पड़ेगा? 2 कमाई, द इनकम विच यू आर मेड इन फॉरेन कंट्री, दैट वी विल टैक्स इन इंडिया ओनली इफ यू आर ए रेसिडेंट इन इंडिया. स्टूडेंट आस्किंग सर हु इज रेसिडेंट? आई विल टेल. फर्स्ट ऑफ ऑल आई मेड यू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली रेसिडेंट है तो फर्क पड़ेगा या नॉन रेसिडेंट है तो फर्क पड़ेगा क्या? पहली बात. यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? दैट इज द रीजन व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रॉपरली कैटेगराइज बिटवीन रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट. अगर आप रेसिडेंट को नॉन रेसिडेंट बना दिए भाई उसका टैक्स पूरा गोलमाल हो जाएगा. नॉन रेसिडेंट को रेसिडेंट टैक्स रेसिडेंट बना दिए उसका टैक्स पूरा गड़बड़ हो जाएगा. वन स्टेप रॉन्ग एवरीथिंग विल गो रॉन्ग. So getting what I'm saying everybody? All of us my dear friends. Pakka clear with this part everybody? Good. So now tell me, is it important to understand residential status? Definitely important. There is no doubt about it. Because if you are a resident or if you are a non-resident, that will have an impact on your tax. That is why it is important to understand whether you are a resident or non-resident, which is clearly based on residential status. Clear my dear friends? Good. I have a question to all of you. Are you all citizens of India? What is the proof? आधार कार्ड. गुड. किसी के पास आधार कार्ड है अभी? नॉट द शॉर्ट वर्जन, द फुल वर्जन. द फुल वर्जन ऑफ आधार कार्ड है क्या? निकालो बेटा. बबल का काम नहीं आता, मुझे उसका बैक साइड का चाहिए. है क्या? नो नहीं, वो काम नहीं आएगा. थैंक यू सो मच. सर ये जो है आपका एक्चुअल आधार कार्ड ऐसा आता है, बराबर है ना बेटा? इसके पीछे बेटा there are some points. I'll tell you. Hold on.
इसमें एक पॉइंट है बेटा, यहां पे एक पॉइंट है, आई रीड आउट दैट लाइन फॉर यू. ओके, आई रीड दैट लाइन. आधार is a proof of identity, not of citizenship. दिख रहा है क्या? देख लो आप. जो शॉर्ट वर्जन है ना आपके पास, उसमें नहीं दिखता आपको, क्योंकि अपन जो बॉटम वाला पार्ट जिरोक्स करके उसको आगे पीछे करके कलर जिरोक्स करके चिपकाते हैं अपन, सबको दिखाते हैं, देखो आ गया, देखो देखो ये आ गया. But that's not how it works, right? लिखा है ना बेटा उसमें एग्जैक्टली क्या लिखा, वापस पढ़ना बेटा प्लीज. दैट्स इट. स्टूडेंट्स आर टेलिंग, अरे हम इंडियन सिटीजन नहीं है क्या? अब वापस आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, ठीक है? वापस क्वेश्चन पूछ रहा हूं. आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया? व्हाट इज द प्रूफ? स्टूडेंट्स टेलिंग, अब अभी तक तो हम सोचते थे आधार कार्ड ही है, अब आप ऐसा बोल रहे तो समझ में नहीं आ रहा हमको. इंडिया में प्रॉपर्टी है तो फॉरेन का बंदा प्रॉपर्टी खरीद नहीं सकता. कुछ भी बोल रहा है क्या यार? फॉरेन का बंदा इंडिया में खेत नहीं खरीद सकता है, बट ही कैन बाय प्रॉपर्टीज. देयर इज वन एक्ट कॉल्ड फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, which clearly says that non-resident guys cannot buy a agricultural land in India, but they can buy a property in India. कुछ भी बोल रहे मस्त, इंडिया में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग है तो क्या तू इंडियन सिटीजन बन जाएगा क्या? कितने सारे फॉरेनर्स को इंडिया में प्रॉपर्टीज है यार. हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट, मतलब जो इंडिया में पैदा है वो इंडियन सिटीजन है. हाँ, आपका है लिखा हुआ ऐसा कुछ? तो इंडिया में बॉर्न हो तो इंडियन सिटीजन है क्या? मतलब समझो, एक सिचुएशन देता मैं. हस्बैंड एंड वाइफ, वाइफ इज प्रेग्नेंट, वाइफ इज ड्यू फॉर डिलीवरी, ठीक है? 9 महीने की जगह 8 महीना खत्म हो गया. उसके बाद ये लोग फॉरेन ट्रिप में गए, इंडिया को आने वाले थे बट फॉरेन ट्रिप में चले गए, एंड डिलीवरी फॉरेन में ही हो गया, बिकॉज बच्चा बहुत जल्दी बाहर आ गया. अब उसको फॉरेन सिटीजन बोलेंगे क्या? डिलीवरी इंडिया में नहीं हुआ, बाहर हुआ. अरे यार, मस्ती का कोई पॉइंट ही नहीं है इधर. ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा मैं. मैडम इज टेलिंग इंडिया में मेरा बर्थ हुआ, ठीक है, फॉरेन में चले गए वो हस्बैंड वाइफ, और डिलीवरी वहां पे हुआ है. अब क्या करेंगे? हाँ, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है क्या आप लोगों के पास? अच्छा, नहीं है क्या आपके पास? फोटोकॉपी, ठीक है. हाँ, क्या है दोस्त? पासपोर्ट. गुड. सर, इंडियन सिटीजन टेक्निकली मीन्स a person who is born in India and holding a valid identity proof in India, which could be your ration card or a voter ID card, or it could be your passport, and some states also give something called domicile certificates, as rightly told. बोला क्या वो बोला था ऑलरेडी. हाँ, ठीक है, जो भी है, something like that will work as Indian citizen. Now the point is that Indian citizenship is different, residential status is different. If you are a citizen of India, it doesn't mean that you are a resident of India as per income tax. Correct, my dear friends? In your law classes, you will learn about something called Foreign Exchange Management Act, FEMA. वहां पे भी रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट आता है, वो बिल्कुल ही अलग है. दैट इज फॉर FEMA पर्पस. FEMA वर्ड सुने क्या आप लोग? That is for FEMA purpose. But what we are going to learn is purely for income tax purpose. Correct, my dear friends? So now I am asking one question. Think properly and tell an answer. Is citizenship, is what, sir? Citizenship a criteria for taxability? Answer is no. Under income tax, what is the criteria for taxability? Residential status. What is that status, beta? Residential status. See, since last 3-4 days or 5 lectures, we were busy in understanding about tax rates. We were busy in all calculating numbers. But now onwards, for next 1-2 days, we'll be busy in calculating dates. Dates. Because in India, residential status is based on duration of stay in India. It is based on what, beta? Duration of stay in India. How many days is in India? Based on that, we will decide whether he is a resident or non-resident. Listen, first let us talk about somebody called what, beta? Individual. The most crazy guy, individual. On that we'll spend a lot of time, because individual will take some sweet time. After that, finally we'll talk about HUF, company, AOP and all.
that will not take much time, hardly 5-10 minutes. But this is most time taking. This will take 1-2 hours minimum. Okay? Ready, my dear friends? Who is that we are talking about? When I talk about residential status of individual, beta, there are two categories. Number one, resident. Number two, non-resident. How do we categorize? For that purpose, they have given some basic conditions under section 6.1. I repeat once again, they have given some what beta? Basic conditions under section 6.1. It is section 6, subsection 1. It is not clause. When do you use the word clause? When both the parts of the sections are not related to each other. If they are related, we'll call it as subsection. Bolo beta. Section 6.1 has given what conditions beta? Basic condition. And there are two basic conditions. How many basic conditions are there? If you satisfy both, or any one, if you satisfy both or any one, we will call him as a resident. And if you satisfy none, we will call him as a non-resident. समझे क्या मीनिंग? इसका मतलब क्या? कितने कंडीशन है? दो. दोनों में से कितना सेटिस्फाई करना है? अगर एक भी करे तो वो रेसिडेंट बन जाएगा. दोनों करे तो? दोनों में सेटिस्फाई नहीं किया तो नॉन रेसिडेंट है तो क्या होगा? उसको सिर्फ इंडियन इनकम टैक्स करेंगे अपन. बराबर है ना? फर्क पड़ेगा ना? डिटेल में बात करेंगे अपन उसके बारे में. पहले नाउ वील फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग हु इज रेजिडेंट, हु इज नॉन रेजिडेंट. देन वील टॉक इन डिटेल हाउ डू वी टैक्स देम. देन वील सॉल्व प्रॉब्लम्स. Ultimate objective is solve problems only and get solution for every problem. That's it. Get back. So how many conditions are there? Two. Both satisfied? Resident. Any one satisfied? Both not satisfied? Chalo. And these conditions are given by which section? Section 6.1. What do you call it? Basic conditions. Story is not yet over. If a person is a resident, if a person is what, sir? A resident. Then there is further some criteria. And that criteria is based on additional conditions. What conditions, beta? Additional condition, which are given under section 6.6. I repeat once again, additional conditions given under section 6.6. And there are two conditions. And if both the conditions are satisfied, we will treat the person as resident and ordinarily resident. It is not resident and ordinary resident. Some people use that nonsense language called resident and ordinary resident. Ordinary nahi hai wo, ordinarily hai. Ordinary means normal. Ordinarily means usually, normally, generally. Difference समझ में आ रहा है ना बेटा? The word is not ordinary. The word is ordinarily. फर्क समझा क्या? सब लोगों को बेटा बोलो. Come, what is the line? Resident and ordinarily resident. If you satisfy both the additional conditions. Clear है क्या? Next to see here. Any one or none. Then we will treat the person as resident but not ordinarily resident. In short, we call this guy as ROR and we call this guy as RNOR. ROR stands for resident and ordinarily resident. Come on, beta. ROR stands for resident and ordinarily resident.
वापस बोल रहा बेटा, ROR stands for resident and ordinarily resident. RNOR stands for resident but not ordinarily resident. He is a resident but he is not an ordinarily resident. So clear my dear friends? Everyone sir, पक्का समझ में आया? अभी अपने को क्या काम है? To understand the conditions. That is the biggest challenge. Is that clear? And you have to understand that in non-resident, there is no further classification. Non-resident is a non-resident. That's it. Non-resident में ऐसा कुछ नहीं है. Non-resident, ordinarily resident, ऐसा कुछ भी नहीं है. Non-resident is a, चलो, अब एक छोटा सा टेबल है. सोच के बराबर जवाब देना. Basic, additional, status. ठीक है? Basic 2 satisfied, additional 2 satisfied. What do you call him? ROR. Excellent. समझ रहे क्या? Basic 1 satisfied, additional 1 satisfied. RN. Basic 2 satisfied, additional 1 satisfied. Basic 1 satisfied, additional 2 satisfied. Basic 1, additional 0. इतना कंफ्यूज होने वाली बात है क्या इसमें? RN OR. अरे समझे क्या? Everyone, basic 0, additional 1. Basic 0, additional, both are satisfied. एक बार बेसिक गया तो मतलब नॉन रेजिडेंट है, एंड अगर नॉन रेजिडेंट है एडिशनल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है. क्लियर नो? दिस टेबल आई रोट इट ओनली फॉर टाइम पास टू मेक श्योर वी रिकलेक्ट. समझ में आ रहा है क्या बेटा? बेसिक कौन से सेक्शन में कंडीशंस? सेक्शन 6 1. हाउ मेनी कंडीशंस आर देयर? 2. इफ एनी वन इज सैटिस्फाइड, resident, both are satisfied, both are not satisfied. Once you are non-resident, story ends there. Story ends there. But if you are a resident, we look at something called additional conditions given under section 6.6, and there are 2 conditions there. Both are satisfied, we'll call him as ROR. Only one is satisfied, RNOR. Both are not satisfied, RNOR. Clear है ना? ROR का full form क्या है? Resident and ordinarily resident. Resident and ordinarily resident. RNOR का फुल फॉर्म क्या है? Resident but not ordinarily resident. चलो बोलो बेटा ROR फुल फॉर्म. Resident and ordinarily resident. RNOR. Resident but not ordinarily resident. Are we clear with this? Everyone sir? पक्का बेटा? Good. Now let us understand what are the conditions. First of all, let's talk about basic conditions which are given under section 6.1. Given under section 6.1. Clear है बेटा? Number 1. He. When I write he also includes she. So don't take emotion. Okay? Done. He must be in India. He must be in India. India covers? बस ज्यादा मत बोलो. Territory waters. He will not stay inside seabed. He will not stay in air. Correct, no? अरे यार प्लीज यार. Clear ना? Come on. He must be in India. क्या डोटे बेटा? बोलना. सबमरीन बोल रहा है. Then he is in India only. चलो. He must be in India for a period of 182 days or more. 182 days or more during the previous year. वापस बोल रहा बेटा, क्या लिखा मैंने? बोलो. He must be in India for a period of 182 days or more
during the previous year. Correct, my dear friends? Come on, he must, what, my dear friends? Be in India. Be in India मतलब virtually or physically? Virtually or emotionally? दोनों भी नहीं है. Physically you have to be there. Correct, no friends? All of us. He must be in India for a period of how many days? 182 days or more during the previous year. You might get one doubt. सर एक बंदा है जो बाहर जाते आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, पर वो बोल रहा 182 डेज इंडिया में ही हूं. कैसे पता लगेगा सर प्रैक्टिकली? अरे एक पासपोर्ट करके एक डॉक्यूमेंट है ना सर, उस पे प्रिंट करते, स्टैंप लेते उस पे ऊपर. When you leave from India, they'll put a stamp on that. What is the date? When you come back, again they'll put a stamp. मालूम पड़ता है ना बेटा? Friends, come on, what is the first condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. What is previous year? Year in which income is earned. What is the previous year for our exam? 23-24. तो क्वेश्चन में जो भी डेट्स देंगे आपका पूरा का पूरा फोकस होना चाहिए सिर्फ प्रीवियस ईयर 23-24. बाकी सब आपके लिए रिलेवेंट है. ठीक है ना? प्लीज ऑलवेज फोकस ऑन व्हाट इज रिलेवेंट फॉर अस. डन. कम ऑन, फर्स्ट कंडीशन. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. So guys, tell me, do you all satisfy this condition? So you're all residents. I am also resident. क्या हो बेटा? बोलना कुछ तो बोलना. Come on, he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or means? Or means anyone is satisfied will become a resident. Anyone satisfied resident only, no? Or second point, he must be in India for a period of, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and मतलब दोनों कंडीशन. क्या बोल रहे हैं? एंड मतलब और प्री. हिंदी वाला वो. ओके. He must be in India for a period of what beta? 60 days or more during the previous year. And what is that word? And English only we'll talk, okay? And 365 days or more. रुको सर, 365 रहते साल में, मुझे पता है. रुको, 365 days or more during 4 years preceding the previous year. चलो guys, what is that line? Come on. First condition क्या है? वापस बोलो. He must be in India for a period of what? 182 days or more during the previous year. Or English, or second point, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Correct na beta? In a year, how many months are there? 12. Thank you so much. How many days are there? Don't mind, I'm asking like this, but I want an answer because our every calculation is based on this only. January, how many days are there? February, 28 or 29. Correct, no? And in exam, don't apply extra talent, up use 28 only. Correct, no friends? Everyone. Yeah. March, 31. April, 30. May, June. एक बार 31, एक बार 30, बराबर ना? ठीक है. जुलाई, अगस्त में 31 आते क्या? चलिए सर. सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये क्लैरिटी जो है ना आपको. थैंक यू सो मच. विल सॉल्व क्वेश्चंस. ओके एवरीबॉडी. एनीवन्स बर्थडे हियर ऑन February 29th? 29th किसी का बर्थडे है क्या? नहीं? एनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स? मेरा एक दोस्त है जिसका बर्थडे 29th को है. वो 4 साल में एक बार सेलिब्रेट करता है.
हाँ फुल ग्रैंड, और 4 साल के एक साथ निकालेंगे ना हम लोग। चलो वापस बोलो, कम ऑन पढ़ो फर्स्ट कंडीशन। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ व्हाट, 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during 4 years preceding the previous year. बराबर है ना बेटा? बोलो अभी असेसमेंट ईयर कौन सा है अपना एग्जाम के लिए? प्रीवियस ईयर कौन सा है? उसके 4 साल पहले क्या होगा? 22, 23, 21, 22, 20, 21, बराबर है ना बेटा? बोलो फर्स्ट कंडीशन क्या है? इन दिस ईयर ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू 182 डेज, बराबर है ना? सेकंड कंडीशन क्या है? और ग्रेटर और इक्वल टू 60 डेज इन दिस ईयर एंड ग्रेटर और इक्वल टू 365। समझे क्या? ये सब डेटा कौन देंगे कि ये साल में इतना दिन है, ये साल में इतना दिन है? कौन बताएगा? क्वेश्चन। प्रैक्टिकली कौन बताएगा? क्लाइंट। प्रैक्टिकली भी क्वेश्चन बताएगा। अच्छा ठीक, अगर क्लाइंट नहीं बताया तो अपन पता लगा सकते क्या? हाँ कैसे? पासपोर्ट दिखता है ना उसमें, कब आया कब गया। फ्रेंड्स, एवरीवन गेटिंग क्लैरिटी? गुड। सर Mr. X, the whole problems in life. Mr. X left India, left India on 6th September 2023. 6 September 2023 for the first time, पहली बार इंडिया से बाहर गए, ठीक है ना? On which date? 6 September 2023 and returned on 7th March 2024, ठीक है ना बेटा? And again left on 19th March 2024, ठीक है ना? 2 questions. I mean, first, only 1 question actually. Determine duration of stay in India. वन 182 आ रहा है क्या? 182 आ रहा है एग्जैक्ट। वन 190, अच्छा 1 स्टूडेंट इज टेलिंग 190, ठीक है। बाकी 180, 182 एग्जैक्ट, 194, 194 दोस्त आप क्या बोले थे? 182, ठीक है 182। वन 195 हमारा स्पेशल आंसर है सर, ठीक है 182। सोचो वापस एक बार, 30 seconds थिंक। क्या 12? ही इज इन इंडिया फॉर 12 days। क्या बोल रहा है यार? वन 170
171 171 आया क्या? 169. Oh my God. Sir, always remember one thing, no? So please listen here. For any question, there could be various methodology to solve an answer, but answer will be only one. Okay? This many answers cannot come. I hope that the answer, actual answer which will come, will match with any of this. Okay? We are trying to find out what, sir? How many days he is in India? बोलो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले इंडिया से बाहर कब गया? पहले मैंने 6 सितंबर को गया, मतलब 6 सितंबर तक तो इंडिया में ही है. अपना असेसमेंट ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर क्या है? बराबर है ना बेटा? मतलब 1 अप्रैल 23 से लेके 6 सितंबर 23 तक वो इंडिया में ही है. बोलो कितना दिन आया? अप्रैल में 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 6 159. समझा क्या? बोलो यार. प्रीवियस ईयर देखना है ना अपने को. सर हर जगह अपन क्या लिखे कंडीशन में? ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. तो प्रीवियस ईयर देखना है ना अपने को. नेक्स्ट, प्रीवियस ईयर में वापस आया क्या वो? तो नहीं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहे क्या यार? प्रीवियस ईयर में वापस आया क्या वो? कब आया? 7 मार्च को आके कब निकल गया? मतलब इतना दिन तो वो इंडिया में ही है. समझे क्या? 7 मार्च से लेके 19 मार्च तक इंडिया में ही है ना. वो कितना दिन हो जाएगा? 12 या 13 या 11? क्या लिखा मैंने बेटा वहां पे? डेट ऑफ कमिंग एंड डेट ऑफ लिविंग. डेट ऑफ कमिंग एंड डेट ऑफ लिविंग इज ऑलवेज व्हाट बेटा? इंक्लूडेड. इज ऑलवेज. अब बोलो मुझे कितना दिन है? स्पीक आउट. 13 days. करेक्ट नो? व्हाट इज द टोटल बेटा? 170. Now students are so happy. क्या गलत हो गया? ये कौन है यार? 194 195 कैसा है यार वो सब फिगर्स? क्या करें आप लोग? और ये 182 कौन है? एग्जैक्ट 182 लेके आए उसको रेसिडेंट बनाने के लिए. सर समझ रहे क्या मैं क्या बोल रहा हूं? बेटा बोलो ना यार प्लीज. आर वी गेटिंग क्लैरिटी ऑन हाउ टू कैलकुलेट? पक्का माय डियर फ्रेंड्स. नाउ स्टूडेंट्स रिएक्शन. सब पहला क्वेश्चन है ना, होता है. रुको जरा. ओके नो प्रॉब्लम. हाँ सबर करो. ओके तो समझ में आ रहा है क्या? पर दिमाग में जा रहा है क्या कॉन्सेप्ट? एवरीवन, ऑल ऑफ अस. चलो वन मोर क्वेश्चन विल डिस्कस सो दैट विल गेट कंप्लीट क्लैरिटी एंड देन वी कैन स्टार्ट राइटिंग. या सुनो पहले. नेक्स्ट सिचुएशन आई टेल. लिसन. वन पर्सन मिस्टर ए. ओके. His duration of stay is as under. Student is asking, sir ये normal है, senior है, super senior है? अरे normal, senior, super senior is important only for tax calculation. That too under optional. अपन वो सब काम कर रहे हैं क्या अभी? अपन क्या काम कर रहे हैं? रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट? तो आपको क्या फर्क पड़ना है? Getting my point? No? Listen. During previous year 23-24. 23
He left India on 5th July. 5th July 2023 and returned on 29th March 2024. रुको कंट्रोल क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. Next, previous year 22-23 he is there for 100 days. Previous year 21-22 he is there for 90 days. And previous year 20-21 he is there for 200 days. And previous year 19-20 he is there in India for 1 day. Please determine whether he is a resident or he is a non-resident. क्या प्रीवियस ईयर में इंडिया में कितना दिन है? 90. अरे ये कब क्या यार इंडिया से? 5th जुलाई, मतलब वहां तक तो इंडिया में ही है. ठीक है, कैलकुलेटर कमान. अप्रैल 30 डेज, 30 प्लस 31 प्लस 30 प्लस 5, 96. और इंडिया में वापस कब आया? 29th मार्च. तो क्या करेंगे? 29, 30, 31, 3 डेज ही है ना. 31 के बाद अपने को क्या करना है यार? फ्रेंड्स करेक्ट नो? हाँ, तो कितना दिन है वो 3 मतलब 99. एक दो लोग अभी भी गलत आंसर दे रहे हैं. यार क्या यार, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या? 99 days. And the moment in previous year it is 99 days, you cannot satisfy first basic condition. Friends, previous year is there for how many days? 99 days. So what has happened now? First basic condition is not satisfied. बराबर है ना बेटा? पर अपने पास एक और बेसिक कंडीशन भी तो है. क्या है वो एक और बेसिक कंडीशन? He must be in India. पूरा बोलो ना यार. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Preceding the मतलब 365 कैलकुलेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर को नहीं लेंगे. प्रीवियस ईयर का पहले 4 साल. बराबर है ना बेटा? आप मुझे बोलो प्रीवियस ईयर में कितना दिन रहना है? 60 and above, 60 days or more. Is it satisfied? Last 4 years he has to be in India for 365 days or more. How many days is there? 391. So answer is A. Because second basic condition is satisfied. I think we are getting clarity. सबको क्लैरिटी आ रहा है? अभी दिमाग में जा रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं? पक्का ना बेटा? एक और क्वेश्चन पूछूं क्या अभी? प्लीज, वी वांट मोर क्लैरिटी ऑन दिस. चलो वन मोर क्वेश्चन. स्पेशल केसेस भी है इसमें, दैट विल सी सेपरेटली. वी आर स्टिल इन बेसिक ओनली. करेक्ट नो? यू नो माय अप्रोच. फर्स्ट विल लर्न द बेसिक, विल बिकम परफेक्ट इन दैट, देन स्पेशल केसेस विल बिकम परफेक्ट इन दैट आल्सो, देन विल सॉल्व मोर क्वेश्चंस, विल कंप्लीट द चैप्टर. सिंपल. ठीक है, चलो. One person, Mr. X, left India for the first time. क्या बेटा? वो कैलकुलेट करते बैठ गया क्या? क्या कुछ लिखा ही नहीं में? He left India for the first time on 6th July 2022.
and returned on 10th February 2024 परमानेंटली. चलिए कब गया इंडिया से? कैलकुलेटर छोड़ो, पहले सुनो क्वेश्चन. ये कब गया इंडिया से? सर, मोर देन बीइंग फास्ट, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज बीइंग एक्यूरेट. करेक्ट. नो, स्पीड इज नॉट द टेस्ट. द टेस्ट इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी. एक प्लेयर आया, बैट्समैन धड़ 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 मारते जा रहा है, 10 बॉल में 25 रन मारा है, उसके बाद आउट हो गया, एंड ओवर सभी और 30 ओवर बाकी है. क्या फायदा वो मैच का? स्ट्राइक रेट इज 150 170. व्हाट इज द यूज? When the match is still 30 overs left, you have to be consistent. You have to be accurate. Correct. No, if the match is 44 overs done, 5 overs left, we'll appreciate. Timing का भी एक बात होती है ना यार. Friends, come on. When did he leave India? 6 July 2022. For the first time. पहली बार इंडिया से गया. मतलब उससे पहले हमेशा इंडिया में था. वो तो क्वेश्चन में बताया नहीं, कॉमन सेंस की बात है. And he returned when 10th Feb 2024 को आ गया. कैसा आ गया? परमानेंटली इंडिया को वापस आ गया. ठीक है. नाउ माय क्वेश्चन इज, फाइंड आउट वेदर मिस्टर एक्स इज रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25. मेरा क्वेश्चन क्लियर है ना बेटा? दोस्तों बोलो. चलो अब करो कैलकुलेटर में. Always keep in mind, don't question the question, only answer the question. Question is 100% करेक्ट. मुझे कुछ भी मत पूछो. ठीक है ना? क्वेश्चन सही है. You want options? I'll give 2 options. अरे यार थोड़ा तो दिमाग यूज करके करो ना यार. क्या इतना सोच रहे हैं आप लोग? नॉन रेसिडेंट, सबका वही आंसर है. आपका रेसिडेंट है और किसका रेसिडेंट है? बस, बाकी सब नॉन रेसिडेंट है. क्या डेंजर लोग हैं यार आपको. The answer is resident. Like that, if you think it is a nonsense answer, the answer is non-resident. अरे यार आप बेसिक सा लॉजिक यूज करो यार. सर क्वेश्चन में कुछ भी देने दो. मैं आपको पहले ही बोला, क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो लोग ऐसे ही देते एग्जाम में. सर आई एम नॉट जोकिंग, बट दिस ऑफ इंस्टीट्यूट गिव्स अ क्वेश्चन. They try to play with your mindset. See, it's all about, see, you take 6 months, 8 months effort, 6 months you take a coaching, after that 2 months, 2-3 months you take effort for self-study, all huge revision, so much effort you take, but ultimately in that 3 hours of exam, what you are doing will make a difference. मतलब 3 महीने जाके जो पढ़ाई कर रहे हैं आप 100 मार्क्स का पेपर का, वो 3 घंटे में आपको डिसाइड करना है. 3 months effort is judged in 3 hours. So in that moment of time, how you are reacting, that's a whole story. That's the heat of the moment. And number attempt is even more crazy. More than May. May is a problem because of environment issue, heat, summer issue. And November is biggest problem because of too much of festivals. Correct? No, a lot of festivals will come, will keep troubling us. Correct? No, it's all mindset. How do we leave all that festivals and focus on what is important for us? Clear, no? Friends, ये आंसर बोलूंगा, उसके बाद कुछ बताऊंगा आपको आज. देखो, come on, listen my dear friends. What is the assessment year?
व्हाट इज प्रीवियस ईयर, दैट्स ऑल। नो, उससे पहले का अपने को लेना देना कुछ तो है नहीं, बराबर है ना। प्रीवियस ईयर 23-24 में हाउ मेनी डेज इज इन इंडिया? प्रीवियस ईयर 23-24 में हाउ मेनी डेज इज इन इंडिया? अरे 10 Feb 24 को आया यार, मतलब 10th को भी काउंट करेंगे ना। स्पीक आउट माय डियर फ्रेंड्स। 10 to 28 विच विल बी 19 डेज। मैंने आपको ऑलरेडी बताया 28 समझ कर चलो आप। 19 plus 31 which comes to 50 days. The moment it is 50 days, you cannot satisfy first condition, you cannot satisfy second condition, and you will become a non-resident. And 3-4 students, what is the problem? They are thinking 6th July को ये गया ना, तो अप्रैल में जून इंडिया में ही है, 31, 30, 31, 6 आ गया। Sir, if you do all that, no, I'm telling you, this will be very problematic. If you do that way, अप्रैल में जून जुलाई टोटल कितना आया, ये रेजिडेंट बन गया। यार ईयर भी तो देखो, 2022 है वो, अपना प्रीवियस 22-23 है क्या? आपने एक साल पहले से ये चालू करे क्या? तो फिर आपका प्रीवियस ईयर जो उस पर ध्यान दो ना यार। यू फोकस ओनली ऑन व्हाट इज योर प्रीवियस ईयर, देन गेट द क्लैरिटी। So getting what I'm saying, you have to be very clear on what is relevant for you. Then speak out. Everybody, that is very important. And please concentrate and please focus. When I'm asking a question, some friends are taking it for granted. आराम से बैठ रहे, बोलेंगे ना यार, कोई ना कोई बोलेंगे, हम भी हाँ 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 करेंगे। Sir, if that is the attitude in CA course, it's very difficult. And let me be very honest with you. We are standing today on February, date क्या है आज? 21st of February. And we have to understand the point very clearly. देखते देखते 1-7-8 दिन में February खत्म ही हो जाएगा, बराबर है ना बेटा? And your classes of group 1 will end by 25th of May. क्या हुआ? 23rd 25th ही होता है यार, वो देख लो, बाद में याद करेंगे मेरे को, ठीक है? 25 मई तक बैच चलेगा आपका। 25 मई के आसपास आपका ग्रुप 2 चालू होगा। ग्रुप 2 जब खत्म होगा, इट विल बी समवेयर बिटवीन अगस्त फर्स्ट वीक और जुलाई एंडिंग और अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास आपका बैच खत्म हो जाएगा। तो 2 टाइम में तो चाहिए ना उन्हें, उनको, बराबर है ना यार? तो अगस्त फर्स्ट वीक के आसपास का बैच खत्म हो जाएगा। बचा कितना है उसके बाद? यू हैव ओनली टाइम फॉर सितंबर एंड अगस्त 20 days, सितंबर फुल मंथ, एंड लेट्स से अक्टूबर 10 days। नवंबर में एग्जाम नहीं है क्या? नवंबर में एग्जाम नहीं है क्या? और अक्टूबर का लास्ट 10-15 दिन तो अपने को रिवीजन करना है ना, बैठ के नया पढ़ाई थोड़ी करना है, बराबर है ना? तो टेक्निकली स्पीकिंग, सर नवंबर को काउंट ही मत करो आप, एग्जाम्स में चले जाते वो, और अक्टूबर का लास्ट एक हफ्ता आप वो एग्जाम का पढ़ाई करने में ही खत्म कर देंगे आप। लेट्स बी लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल। बोलने के लिए बहुत कुछ बोलूंगा मैं, 6 महीना टाइम है अपने पास, कुछ भी नहीं है वो। रीजन बोलूं क्या उसके लिए? यू विल हैव आफ्टर एग्जाम, आफ्टर क्लासेस, you will have only 60 days time with you. If you calculate, you will have 60 days time with you. Calculate कर लो चाहिए तो 60 days time. In 60 days, you have to complete 6 subjects. If you divide by 6, it will become 10 days per subject. मतलब जो सब्जेक्ट आप 3 महीने में पढ़ेंगे, उसको 10 दिन में खत्म करना है। That is the time when you will realize कि भाई क्लास करना चाहिए था, क्लास मिस नहीं करना चाहिए था, फालतू में 4-5 लेक्चर छूट गए, बैकलॉग है, ये सब चीजें तब याद आएगा। इफ यू डोंट डू दैट नाउ, एंड इफ यू वांट, आई कैन ब्रिंग एनी ऑफ योर सीनियर, एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु आर देयर इन लास्ट बैच और लास्ट बैच, दे विल टेल यू देयर एक्सपीरियंस। सबसे पहले आपको वही बताएंगे कि स्टार्टिंग में जो 4-5 महीना क्लासेस का होता है, जो रोज एक बार पढ़ाई कर लो, रोज नहीं हुआ तो कभी किसी दिन टाइम पास हो गया तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट डे उसको कवर अप करो। 100% आपको वही एडवाइस मिलेगा। दैट्स अ ब्रूटल फैक्ट। 60 डेज में 6 सब्जेक्ट करना आसान नहीं है। आसान है कब? इन द फर्स्ट 6 months ड्यूरिंग द क्लासेस यू आर क्लियर विद द कॉन्सेप्ट्स। आई एम नॉट टेलिंग बिकम परफेक्ट एंड एक्सपर्ट, इट विल टेक सम टाइम। ओवरनाइट यू विल नॉट बिकम एक्सपर्ट एंड परफेक्ट, बट यू हैव टू बी फोकस्ड टुवर्ड्स इट, देन इट विल हैपन। समझ रहे आप मैं क्या बोल रहा हूं? ये सब बोलने का रीजन क्या है? फर्स्ट डे को आपको एक बात बोले थे, डे 1 से आप सीरियस रहो बेटा, डे 1 से डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। करेक्ट? नो सर, आई एम समबडी हु लव माय लाइफ like anything. I enjoy my life like anything, but I have a clear difference between
professional work and personal work. In the same way, when you're enjoying, you enjoy. Like a mad fellow, you enjoy. And when you're studying, like a mad fellow, you study. करेक्ट नो इधर बैठ के अपन कुछ और सोचते बैठे क्या फायदा पिक्चर देखने गए थिएटर में बैठे फिर सोच रहे सेक्शन 2729 पागल है क्या क्यों गया पिक्चर के लिए फिर अरे जहां पे जो करना चाहिए वो इज्जत से करो ना यार करेक्ट नो सी फॉर एग्जांपल लेट्स से टुडे यू थॉट यू विल स्टडी आफ्टर द क्लासेस आर ओवर बट शाम में कुछ प्रोग्राम आ गया फ्रेंड्स के साथ अभी और 6 महीना बाकी एग्जाम के लिए तो आपने सोचा ठीक है यार एंजॉय करते हैं आज के दिन फ्रेंड्स के साथ जाओ कोई बात नहीं बट एक्स्ट्रा डे कवरअप भी तो करना है वो भी तो आपका जिम्मेदारी है because I believe something a lot in my life. 2 lines which will always there in the back of my mind. That is, one life, if you don't enjoy now, when will you enjoy? In the same way, brain में एक और सेट से एक और dialogue भी आता है. One life, if you don't succeed now, when will you succeed? दोनों भी है. पर सिर्फ इधर ही सुनते. One life, if you don't enjoy, when will you enjoy? खत्म. One life, if you don't succeed, when will you succeed? पागल रहेंगे फिर. पागल रहेंगे फिर. लाइफ को एंजॉय भी तो करना है. बराबर है ना बेटा यू हैव टू डू बोथ यू हैव टू बैलेंस बोथ यू माइट आस्क सर हमको बैलेंस करना नहीं आ रहा है एक ही करना है तो बस करो पढ़ाई फिर छोड़ दो एंजॉयमेंट क्योंकि प्रायोरिटी वो है ना प्राइमरी वही है ना एंजॉयमेंट तो सेकेंडरी एक्टिविटी है ना प्राइमरी एक्टिविटी तो वही है सेकेंडरी कैन नॉट डोमिनेट प्राइमरी एक्टिविटी सेकेंडरी इज ओनली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर अवर कंफर्ट करेक्ट नो फॉर एग्जाम्पल सर इन अ डे होल डे एट द एंड ऑफ द डे डेली आई वॉच माई स्क्रीन टाइम भाई डेली में चेक करता स्क्रीन टाइम कभी कभी संडे को सैटरडे को स्क्रीन टाइम शूट हो जाता है करेक्ट ना ज्यादा कुछ काम नहीं है देखते बैठते टाइम पास इंस्टाग्राम फेसबुक करेक्ट नो बट व्हाट आई डू ऑलवेज इज लेट्स से फॉर एग्जांपल समटाइम व्हेन आई एम वाचिंग इंस्टाग्राम रील्स कभी 5-10 मिनट देख लिया ना मैं पहले इंस्टाग्राम ओपन करते पहले मैं वॉच देख लेता सबसे पहले द मोमेंट ओपन इंस्टाग्राम आई लुक एट माई वॉच एंड एक 5-10 मिनट के बाद अगेन आई लुक एट माई वॉच मुझे समझता है यार 5-10 मिनट हो गया चुपचाप उसको बंद करके साइड में फेंक देता how much more interesting it is and if you don't do that khatam they are all ready to waste your time today's date to waste time there are so many options instagram reels देख के बैठ गए तो बस चलते रहता घंटा भर एक्सपीरियंस करे होंगे आप लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आता है और उधर दिखाता है पार्ट 1 अपन उसको प्रेस करते वो पेज में जाते उधर पार्ट 2 देखते फिर दूसरा कुछ वीडियोस आता वो भी देखते फिर और टाइम पास मोए मोए फिर बोलते हैं क्या मस्त है यार अपन भी एक रील बनाते मोए मोए हो गया फिर कुछ नहीं यार टाइम पास करने के लिए अपने पास बहुत ही ऑप्शन है आजकल नॉट नॉर्मल ट्रेमेंडस ऑप्शन वी आर करेक्ट नो so many options we have in our life to waste our time but we have very few options in our life to make our time valuable so you have to focus on those options where your time will be valued so please don't ever waste your time करेक्ट नो आजकल टाइम पास करने के लिए बहुत ऑप्शन है अपने पास बट ऑल द टाइम पास विल वेस्ट योर टाइम दिस इज नॉट जस्ट इंस्टाग्राम फेसबुक और दैट न्यूसेंस क्या नाम है उसका मैं यूज नहीं करता उसको बट हाँ स्नैपचैट स्नैप ले लो अपडेट करो स्नैप ले लो अपडेट करो जो देख रहा है उसको काम नहीं है जो डाल रहा है अपने को काम नहीं है कितने लोग यहाँ पे स्नैपचैट यूज कर रहे हैं अब हाथ नहीं उठाते बट आई नो 9:15 को एक स्नैप आता है feeling hungry, still no break. After 10 o'clock, stomach satisfied, but class not yet over. 11 o'clock, one headache over, second headache starting. शाम में 5:30, end of the day. That's the time. फिर रात में 8 o'clock और एक snap, it's me time. पागल है यार थोड़े लोग स्नैपचैट में मतलब नॉर्मल नहीं नेक्स्ट लेवल पागल है सो प्लीज डोंट गेट एडिक्टेड टू ऑल दैट शिट दैट इज ऑल फॉर फन enjoy if you want to enjoy I will not stop you but have some control over it let that not dominate you that is most important clear na everyone बहुत ज्ञान हो गया अभी आ जाओ it's okay होता है sir clear अभी let's get back to the work बोलो ना यार so what are the basic conditions which section 6.1 how many conditions are there इतना सब बोलने का रीजन क्या है बताया ये क्वेश्चन में इतना क्लियर दिया 2022 और 1-2 लोग मेरे को देख रहे सर वो डेट गलत है गलत है गलत है अरे मुझे पता है ना मैंने क्या लिखा अगर मुझे 23 लिखना 23 लिखता था मैं एग्जाम ऐसे ही करते जानबूझ के you should know what is previous year for you you should know what is relevant for you clear my dear friends
Done. Come on. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or कैसा रोते रोते बोल रहे यार, थोड़ा प्यार से एक बार स्माइल करो सब लोग. अब बोलेंगे आंसर. Please tell happily, don't put that sad faces. Whenever motivation is being given, some friends, हाँ, और 10 मिनट बाद क्या सुने ये सब रिएक्शंस आते हैं. ठीक है यार, when a motivation is being given, take it positively and work towards it. Don't become silent like that. Come on. First condition, he must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. दोस्तों clear है? Everyone, shall we start special cases now? But before that, let's write this, then we'll start special cases. Clear na beta? Come on. Put the chapter name, residential status and scope of total income. Chapter name is residential status and scope of total income. Chapter का नाम क्या है बेटा? Residential status and scope of total income. Residential status and scope of total income. Residential status and scope of total income. Shall we start? Write down. First point. Sir, we use bullet points, okay? You're using bullet points only, no? Not paragraph stories and all, right? Under income tax, residential status of an individual under income tax, residential status of an individual is based on, under income tax, residential status of an individual is based on duration of stay in India. Residential status of an individual is based on duration of stay in India. Correct, my dear friends? Next point. The date of coming and the date of going, the date of coming and the date of leaving लिखो बेटा, going मत लिखो, date of leaving, LAVING, going मतलब too much हो गया वो, date of leaving, date of coming and date of leaving India, date of coming and date of leaving India is always included. It's always what beta? Included. Clear, my dear friends? Full stop. Next point. Stay in India need not be continuous. Stay in India need not be continuous. He might come, go, no. Need not be continuous. And need not be at, stay in India need not be continuous and need not be at same place.
करेक्ट नो? 10 दिन पुणे में, 10 दिन बॉम्बे में, 10 दिन हैदराबाद में, 10 दिन चेन्नई, 10 दिन बैंगलोर, 10 दिन सूरत. Matters is wish, but it's all part of India only. No? Then speak out. Next point. Stay in territorial waters. Stay in territorial waters is also regarded as stay in India. Stay in territorial waters is also regarded as stay in India. दोस्तों क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट. Residential status of individual is determined by applying basic conditions and additional conditions and what beta? Additional conditions given under section 6.1 and 6.6. Six one and 6.6. दोस्तों क्लियर है? चलो take this chart, take this table. Come on, please take this diagram.
done. Chalo, put the heading basic conditions under section 6.1. Basic conditions under section 6.1. Clear no? Number 1, he must be in India. He must be in India for a period of he must be in India for a period of 182 days or more. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or second point, क्या बेटा बोलो? He must be in India. He must be in India for a period of. He must be in India for a period of 60 days or more. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year. And 365 days or more. 60 days or more during the previous year. And 365 days or more during 4 years. And 365 days or more during 4 years preceding the previous year. Clear beta? चलो वापस बोलो बेटा, come on, conditions last time, repeat once again for the first one. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. If you satisfy any one condition, we'll call him as resident. Both satisfied, resident. Both not satisfied, we'll call him non-resident. If he's a non-resident, the story ends there. Clear, friends? That's it. Take this example 1. ये नोट लिखने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी लिख लिया अपन, ठीक है ना? डोंट राइट दैट नोट, ऑलरेडी वी रोट दैट नोट. सर बाय द वे एक सेकंड, इस क्वेश्चन में ड्यूरेशन ऑफ स्टे 172 आया ना आपको, ये रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है? डिपेंड्स क्या है? क्वेश्चन पढ़ के बोल. डिपेंड्स नहीं है इसमें आंसर, क्वेश्चन पढ़ के बोल. क्या कुछ भी बोल रहे यार? ही इज डेफिनेटली ए रेसिडेंट बिकॉज 182 कांट बी सेटिस्फाइड बट ही कैन सेटिस्फाई 60 एंड 365. उसका डिपेंड्स क्यों बोला इसने? क्योंकि वो सोच रहा है अगर 365 है तो रेसिडेंट बनेगा, बट 365 है पक्का. स्टूडेंट बोल रहा है कैसा सर? अरे ही लेफ्ट इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार इंडिया से बाहर गया, मतलब उससे पहले तो इंडिया में ही है, तो 365 तो कैसे भी सेटिस्फाई करेगा वो? लॉजिक, मैजिक, डन.
So finish writing example 1. Yeah. Take this example 2 also. Done, friends? Chalo, take the third example also, please. Come on, please take third example also. Please cooperate. Please write.
Done? Come on, my dear friends. What are the basic conditions? First one. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. So to understand the two conditions, we took so much time because it's very important. But I'm sure we got very good clarity on this. Yeah? Now see the special interesting point. In following cases, only first basic condition is applicable. Normally, how many conditions are there? 2. दोनों में से अगर कोई भी satisfy करे तो resident बोलेंगे ना बेटा? दोनों में satisfy करे तो क्या बोलेंगे? Resident. What if both are not satisfied? Non-resident. Exactly. What the first one? 182 or more during previous year. Second, 60 or more during previous year and 365 or more in last 4 years preceding the previous year. But what is that I'm telling now? In the following cases, only first condition is applicable. मतलब क्या इसका? Following cases में a person is a resident only if he is in India for 182 days or more during the previous year. Clear, friends? First point. Indian citizen. What citizen, beta? Now, who is an Indian citizen? Who is born in India and holding a valid identity proof in India. Correct, my dear friends? In question, they will only tell that this person is Indian citizen. And if question is silent, don't assume that he is an Indian citizen. Clear, friends? Last time I am telling, first and last time I am telling, question will clearly tell whether he is an Indian citizen. If question is silent, what is our assumption? He is not an Indian citizen. This clear cut point given by ICI. करेक्ट नो क्वेश्चन में हम बताएंगे इंडियन सिटीजन है, हम नहीं बताए मतलब आप अज्यूम मत करो कि वो इंडियन सिटीजन है. क्लियर है क्या? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया, लिविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. कम ऑन फ्रेंड्स, क्या हुआ प्रीवियस ईयर में? ही लेफ्ट इंडिया. फॉर व्हाट पर्पस ही लेफ्ट इंडिया? फॉर द पर्पस ऑफ व्हाट माय डियर फ्रेंड्स? एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर काम करने चले गया वो. या तो दो सिचुएशन है, एक तो इंडिया में उसको जॉब नहीं है और उधर जॉब करने गया, या तो ये भी हो सकता है कि इंडिया में ऑलरेडी उसको जॉब है बट ही गॉट ए बेटर जॉब और ट्रांसफर, कुछ भी हो सकता है. फ्रेंड्स, गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? कम ऑन, रीड द लाइन वंस अगेन. Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Clear, friends? Second point. Indian citizen leaving India, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of foreign bound ship. What is that word, sir? Come on, what is the second point? Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of foreign bound ship. मतलब there is some Indian ship which is going to foreign. वो ship में वो जा रहा है. But as what? Crew. Who is a crew? कोई idea? Crew मतलब people are working in that ship is called crew. For example, in flight they tell no cabin crew. Crew मतलब people who are working in that. That's called crew. Getting my point, everybody? चलो first point क्या है बेटा बोलो? Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second case, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of foreign bound ship. As a member of crew of foreign bound ship. Third case,
Last point. Indian citizen. Come on, which citizen? Indian citizen or a person of Indian origin. I repeat once again, Indian citizen or a person of Indian origin. Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India. So first 2 point to जाने का था. First 2 point is person leaving India. The third point is what? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India during the previous year for the purpose of visit. मतलब इंडिया को परमानेंटली नहीं आया, वो किसके लिए आया? सिर्फ विजिट के लिए आया. And that visit could be personal, visit could be official. But simple terms, visit means short term, temporary, not permanently. For example, Shivateja is coming to Pune for the purpose of visit to Pune. Time pass ke liye nahi, official only, but coming for visit only, I am not shifted to Pune permanently. You are getting what I am saying, everybody? Or somebody are outstation people who have come to Pune only for taking coaching, staying in hostel. Once 6 months and classes are over, they'll go back to their hometown. Correct? No, you'll not stay here permanently, no? You are local, you will stay here permanently. If not, why will you stay here? Getting what I am saying, everybody? All of us? So visit का मतलब ये नहीं कि पर्सनल है. वापस बोल रहा मैं. पढ़ो लास्ट लाइन क्या है? Indian citizen or a person of Indian origin. वापस बोल रहा बेटा, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India during the previous year for the purpose of visit. He is coming to India for the purpose of visit. Visit, does it mean personal? No, it could also be official, but it means temporary, but not permanent. Now, interesting point is, who is that person called? Person of Indian origin. I'm sure majority here could be person of Indian origin. I'm not sure. What this told in the law is that if he means that person, he or she, that person, if he or any of his parents or any of his grandparents, only grandparents, don't tell grandparents, nahi. Parents, grandparents, that's it. Any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. If he himself or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. Undivided India means before 1947. Before independence was. Tell me guys, getting clarity. So were you born in undivided India? No. Your parents? I'm sure no. Grandparents? Exactly. No. Possible. Anything is possible here. I mean, let's not get into details. किसका grandfather वैसा है, अभी वो जरूरत नहीं है अभी. You're getting what I'm saying, everybody? All of us clear or not? कुछ तो समझ में आ रहा है क्या? क्या बोल रहे हैं उन्होंने? If he or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India, then you are called as a person of Indian origin. Person of Indian origin. If he or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. And let me tell you, in grandparents covers both पैटर्नल एंड मैटरनल. समझे क्या? क्या मतलब है उसका पैटर्नल एंड मैटरनल? क्या मतलब है उसका?
Mummy side, Papa side, Dada, Dadi. That's it. You got your answer. Clear now, my dear friends? Everyone, is great grandparents covered? What is covered is only parents or grandparents who are born in undivided India. Getting clarity, everybody? Bolo beta. All of us. Now let me take one small interesting example. Then we'll write that point. Listen. So let us say one person, Mr. P. Mr. P. He left India. He left on 6th September 2023 for first time. For the purpose of job in Microsoft. Job in Microsoft. So getting clarity, everybody? Speak out. And returned after 1 year. Okay? Determine residential status of Mr. P for assessment year 24-25. मेरा क्वेश्चन समझे क्या बेटा? Every once exactly. बोलो बेटा क्या है आंसर? हाँ, नॉन रेजिडेंट क्यों? रेसिडेंट क्यों बेटा? So what are the two basic conditions? He must be in India for a period of what? 182 days or more during the previous year. Or second option is what? 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. Now tell me, can this person satisfy the first basic condition? No. Why? He left on 6th September. So is there in India only for 170? 159 आ रहा है क्या? ठीक है, is there in India only for 159 days? When he is in India only for 159 days, he cannot satisfy the first basic condition. But can he satisfy second basic condition? Yes. The answer is, without any doubt, he is a resident. You're getting what I'm saying, everybody? क्या हुआ? क्यों स्टक हो गए आप लोग अचानक? क्या बेटा? एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, ठीक है, तो ओनली फर्स्ट कंडीशन आएगा. ओ 5 मिनट पहले मैंने आपको एक पॉइंट बोला था. क्या बोला था मैंने? इफ ही इज एन इंडियन सिटीजन, क्वेश्चन विल टेल दैट ही इज एन इंडियन सिटीजन. इफ नॉट, डोंट अज्यूम. फर्स्ट वाला पॉइंट क्या है इधर? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. लेट मी टेल यू, मैं आपको जो क्वेश्चन पूछा अभी वो एग्जाम क्वेश्चन है. ये एग्जाम क्वेश्चन है. सब लोग यही सोचे एग्जाम में, अरे एम्प्लॉयमेंट के लिए गया, 182 आना चाहिए, ये नॉन रेजिडेंट है. अगर एक बार आपने रेजिडेंट को नॉन रेजिडेंट बना दिया भाई, उसका टैक्सेबिलिटी पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा. करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स? नाउ वन लाइन आई ऐड. इफ मिस्टर पी इज एन Indian citizen, then his
residential status would be non-resident. I think we understood. Sir, you have to keep in mind what you know. Normally, दो केसेस है. ये तो 182 वाले डेज ऑफ मॉड्यूल प्रीवियस ईयर, सेकंड 60 एंड 365. तीन स्पेशल केसेस है. वो तीनों स्पेशल केसेस में फर्स्ट कंडीशन ही आएगा, सेकंड कंडीशन नहीं आएगा. और तीन स्पेशल केसेस में फर्स्ट दो स्पेशल केस में उन्होंने बताया इंडियन सिटीजन, थर्ड केस में बताया इंडियन सिटीजन और ए पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन. इन शॉर्ट देखें तो तीनों में भी इंडियन सिटीजन कवर्ड है. अगर क्वेश्चन साइलेंट है हम अज्यूम करेंगे कि इंडियन सिटीजन. मैंने आपको क्लियर बताया था ये चीज. क्वेश्चन मस्ट टेल यू दैट ही इज एन इंडियन सिटीजन. इफ क्वेश्चन इज साइलेंट वी विल नॉट अज्यूम दैट ही इज एन इंडियन सिटीजन. मस्त है ना? बोलो ना यार, कंफ्यूज होने का कितना पॉसिबिलिटी है, मार्क्स जाने का कितना पॉसिबिलिटी है. अगर क्लैरिटी है अपने पास तो मार्क्स आने का कितना ज्यादा पॉसिबिलिटी है. अपने पास क्लैरिटी है अपने को आएंगे, जिसको क्लैरिटी नहीं है उसकी तो लग गई. सिंपल इक्वेशन, सिंपल है और कुछ नहीं. सर वी क्लियर दिस पॉइंट एवरीबॉडी? बोलो ना बेटा प्लीज, पक्का क्लियर? चलो पुट द हेडिंग इन बुक स्पेशल केसेस. एग्जाम्पल्स लिखे ना लास्ट अभी. हाँ, पुट द हेडिंग इन बुक स्पेशल केसेस. Write down in the following cases. In the following cases. In the following cases, come on. Only first basic condition. The following cases, only first basic condition is applicable. In the following cases, only first basic condition is applicable. Correct na beta? First basic condition matlab 182 days or more during the previous year. Chalo, first point. Indian citizen. Indian citizen. Leaving India. Indian citizen leaving India during the previous year. Indian citizen leaving India during the previous year. During the previous year for the purpose of employment outside India. चलो सर, ये क्वेश्चन समझ में आया ना आपको? बेटा बोलो ना यार. एक और क्वेश्चन पूछूंगा, इसका भी जवाब दो ना यार. ये भी एक बार एग्जाम में आया था लॉन्ग बैक. मिस्टर क्यू an Indian citizen left India first time. Left India first time for the purpose of employment in UK. चलो बेटा क्या लिखा मैंने? Mr. Q, an Indian citizen, left India first time for the purpose of employment in UK. He left India for the first time on 6th August 2022. And returned what beta? Permanently. Returned permanently on 10th Jan 2024. Clear, my dear friends? Now question is all about what will be his residential status for assessment year 24-25.
सर ये इंग्लिश लैंग्वेज का गेम है, सच बोलो तो। चलो बेटा, क्या है आपका आंसर? नॉन रेसिडेंट। किस किस का आंसर नॉन रेसिडेंट है? हाथ उठाओ। गुड, ऑलमोस्ट एंटायर क्लास, ब्रिलियंट। द आंसर इज ROR। लिसन वाई। फर्स्ट ऑफ ऑल, कितने बेसिक कंडीशन है? 2। स्पेशल केसेस में सिर्फ पहला वाला करेक्ट ना? आपको क्या लगा स्पेशल केस फर्स्ट वाला आएगा इसमें? फर्स्ट स्पेशल केस क्या है? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, पढ़ो पढ़ो वापस पढ़ो, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द, ये असेसमेंट ईयर कौन सा है मेरे भाई? 24-25। प्रीवियस ईयर कौन सा है? ये 23-24 में बाहर गया क्या? स्टूडेंट इज टेलिंग 2024 में बाहर ही तो है। अरे बाहर ही तो है, नहीं है मेरा क्वेश्चन। 23-24 में इंडिया से बाहर निकला क्या? यू आर गेटिंग व्हाट आई एम आस्किंग? सर यू माइट टेल सर 2024 में बाहर ही है। अरे बाहर ही है मेरे भाई, बट इन 23-24 ओनली डिड ही लीव इंडिया। वो साल में बाहर निकला क्या इंडिया से? कब निकला बाहर? 22-23 में निकला। So this will not come in first special case. This will not come in first special case. Student might tell, the third वाला आ सकता ना, Indian citizen or a person of Indian origin who is coming to India. क्योंकि प्रीवियस ईयर में इंडिया को आया वो। प्रीवियस ईयर में इंडिया को कब आया? प्रीवियस ईयर में 10th जैन को इंडिया में आएगा ना बेटा। आपको ये भी डाउट आ सकता है, सर थर्ड स्पेशल केस आ सकता है ना, इंडियन सिटीजन कमिंग टू इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आया ना सर? बट देयर इज अ वर्ड कॉल्ड फॉर द पर्पस ऑफ विजिट। मैंने क्या लैंग्वेज यूज किया इधर? फर्स्ट वाला स्पेशल केस भी नहीं आएगा, थर्ड वाला स्पेशल केस भी नहीं आएगा, सेकंड वाला तो आने का सवाल ही नहीं है, because सेकंड वाला इज फॉर क्रू ऑफ एन शिप। तो मतलब तीनों स्पेशल केस जब नहीं आएगा तो कितने कंडीशन है अपने पास? 2। एंड दिस गाय कैन सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन because 10th Jan is coming to India means from 10th Jan to 31st March he is in India. That means he is in India for 60 days or more during the previous year. And in last 4 years he is definitely there for 365 days because he left India first time on 6th August 22. He is definitely a resident. आपको समझ में आ रहा है क्या? क्यों? स्पीक आउट, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्सन मिस्टर क्यू इज नॉट कवर्ड इन स्पेशल केसेस। बिकॉज स्पेशल केस कब आएगा? इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, बट इज लिविंग ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। डिड ही लीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर? Now, should I tell the English language now? The English language is during 23-24, he did not leave. He already left. During 23-24, he did not leave. He already left. Law never told he left during previous year. Law told he is leaving during the previous year. Leaving is different. Left is different. Leaving means current present tense. Left means past tense. And law is not talking about past tense. We want present tense. English language. समझ में आ रहा है ना? Almost majority class has raised hand for non-resident. For non-resident exactly. आंसर समझ में आया? मजा आ रहा है? See enter. Taxation. Now I am sure you understood how is there a possibility to lose marks. Possibility of losing marks समझ में आ गया ना? But is there a possibility of gaining marks also, which others are not gaining? जिसको क्लैरिटी नहीं है वो तो जो मन में है वो बोलेगा, वो तो सीधा बोलेगा मेरे को कुछ भी नहीं दिख रहा है, मेरे को एक ही वर्ड दिख रहा है वहां पे, एम्प्लॉयमेंट नॉन रेजिडेंट। भाई पूरा लाइन भी तो याद रख। हाफ नॉलेज वेरी डेंजरस। क्लियर है ना दोस्त? समझ रहा क्या? दिमाग में जा रहा है क्या? पक्का याद रखेंगे? ठीक है, क्लियर नो? सर समझा क्या ट्विस्ट? आई नो यू आर फीलिंग लिटिल सैड।
सब लोग नॉन रेजिडेंट सोचे थे, हाँ ठीक है सोचे थे, दैट इज योर फीलिंग्स, दैट इज योर इमोशन, बट द प्रॉब्लम इज नो फीलिंग्स एंड इमोशंस, ओनली सेक्शंस एंड सबसेक्शन। इसका मीनिंग समझ में आ रहा है ना? स्टूडेंट बोले सर स्लोली वो डायलॉग का मतलब समझ में आ रहा है हमको। ठीक है चलो, क्या लिखे आप? फर्स्ट पॉइंट लिखे ना? फर्स्ट पॉइंट आप लोग लिखे ना सर? इसका एग्जाम्पल ले लो सीधा, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 1। नहीं ये दो एग्जाम्पल फर्स्ट पॉइंट का ही है, तो ये अभी एग्जाम्पल लिख लो पहले, फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं। जॉब माइक्रोसॉफ्ट है बेटा, पता है ना माइक्रोसॉफ्ट? MS ऑफिस बोलते ना, MS तो माइक्रोसॉफ्ट ही है। कौन है माइक्रोसॉफ्ट का CEO? सत्यम, सत्य कंप्यूटर से क्या? सत्य, सत्य नाडेला, ठीक है। हु इज CEO ऑफ गूगल? सुंदर पिक्चर है, थैंक यू। हर चीज का आंसर मोदी जी नहीं होते। हाँ क्या क्या? क्या था वो? ठीक है हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। फर्स्ट एग्जाम्पल वो है यार मिस्टर P वाला। आप क्यों लिख रहे क्या? P लिख रहे ना? Done? Example 2. Take this also, then we'll take a break. ये केस समझा ना बेटा? सेकंड क्वेश्चन, ये सेकंड क्वेश्चन से अपने को दिमाग में क्या जाएगा बोलो? ये सेकंड क्वेश्चन के बाद दिमाग में क्लियर रहेगा, प्रीवियस ईयर में उसको जाना चाहिए, या तो थर्ड केस में विजिट के लिए आया हो तब भी स्पेशल केस आएगा। तो जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं उसमें क्लियरली अपने को समझना है कि स्पेशल केस आएगा या नहीं आएगा। स्पेशल केस नहीं आएगा तो अपने पास दो कंडीशन है, स्पेशल केस आएगा तो अपने पास एक ही कंडीशन है। क्लियर है ना? और रेजिडेंट को अपन नॉन रेजिडेंट बनाएंगे या नॉन रेजिडेंट को रेजिडेंट बना देंगे,
पूरा का पूरा आंसर गड़बड़ हो जाएगा एंड इट बिकम्स वेरी हॉरेबल. That's it. That's sort of example 2 where I finished writing. You can take a break. After break, we'll talk more. Thank you.
We ready? Check. Hello. Yes. Get back. Come on, my dear friends. What are the basic conditions? भूल गए क्या? He must be in India, stay in India. What is that? Stay in India. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 3 to 5 days or more during the 4 years preceding the previous year. बेटा बोलो बेटा, चलो वापस बोलो. फर्स्ट पॉइंट क्या है? He must be in India. Be in India मतलब physically be there in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year, and 3 to 5 days or more during the 4 years preceding the previous year. दोस्तों बराबर है ना? But there are 3 special cases where only first condition is applicable. Correct? No. What is that first special case? Indian citizen. Starting line is Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Clear, my dear friends? Sure, what is the second point? Come on. Start writing. Second point. Indian citizen What start in the second point? Indian citizen leaving India Indian citizen leaving India during the previous year. Indian citizen leaving India during the previous year. During the previous year as a member of Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew, CREW, crew of foreign bound ship. ओके बेटा लिख दिया क्या? चलो सेकंड पॉइंट क्या है बेटा बोलो. इंडियन सिटीजन leaving India during the previous year as what? Member of crew of foreign bound ship. बराबर है ना बेटा? Crew means what? People are working in the ship. Now there is an interesting point to be noted in this case. For the second point, there is some concept to be understood. Listen very clearly, my dear friends. Okay? What do you call? Ignore the diagram, but understand the concept. ठीक है ना? Because you know very well why I came to commerce. Because I don't like science. Okay? Sir, up to 12 nautical miles, what do you call it? Territorial waters, which is a part of India only. Correct, my dear friends? Ship is not like a bullet train. Ship is not like a bullet train where it will start and instantly it will go fast. That's not like that. And when a ship is sailing, it is important that it has to take care of the waves, tides which are coming and accordingly operate the ship. Correct, no friends? Sir, all of us, generally we use the word ship in case of passengers. In case of goods, we use the word called vessel. I hope you would have heard the word called vessel. Vessel words is used in case of cargo, goods. But for passengers, we use the word ship. Titanic. You're back. So what has happened is, there is one. There is one ship. ठीक है? वाटर है बेटा. ठीक है ना? वो
fish deemed to be. इसलिए बोला मैंने डायग्राम को एडजस्ट कर लो आप. चलो इधर now what has happened is दिख रहा है ना आपको? क्या हो बेटा? दैट इज शिप. बहुत छोटा हो गया क्या? ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन आर लार्जर देन दे अपीयर. ऑब्जेक्ट्स ऑन द स्क्रीन आर लार्जर देन दे अपीयर. आपको छोटा दिख रहा है, एक्चुअली बड़ा है वो. दूर से दिखता है ऐसा ही. थोड़ा पास में गया तो मालूम पड़ता है कितना बड़ा है. ठीक है ना बेटा? एवरीवन प्लीज स्पीक आउट. चलो get back guys. Now what is happening here is there is a ship. A person got into the ship and the ship is slowly traveling on territorial waters. Till the time, now tell me my dear friends, till the time ship does not cross territorial waters. Vapas I repeat my dear friends, till the time ship does not cross territorial waters, he is in India only. Because territorial waters is a part of India. Now practically the problem is, today the ship has started from the port. 4-5 दिन लग रहा है वो टेरिटोरियल वाटर्स क्रॉस करने के लिए. एग्जैक्टली कब क्रॉस करे मालूम पड़ता है क्या प्रैक्टिकली? कुछ बॉर्डर ड्रॉ करे क्या इंडिया का टेरिटोरियल वाटर्स पे? कुछ ऐसा एक राउंड रोप लगा है, ये रोप क्रॉस करते ही टेरिटोरियल वाटर्स खत्म हो गया. इसके अंदर टेरिटोरियल वाटर, ऐसा प्रॉपर रोप कुछ नहीं है. यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो प्रैक्टिकली इट बिकेम अ बिग इशू. Practically became a big issue. Why? Because the moment you step into the ship, till the time it crosses territorial waters, you are still in India. So when will you say that you left India? That is the problem, no? So speak out, my dear friends. Everyone, sir. So for that purpose, what they told in the law is, in case of people working as a crew, they are given an identity card. They are given what, my dear friends? Identity card, which is technically known as continuous discharge. 1-2 people are giving answer. कहाँ पे पढ़े आप लोग? Continuous discharge certificate. क्या नाम है बेटा इसका? Is an identity card given to the people working on the ship, technically called crew of the ship. बराबर है ना बेटा? Everyone, sir. इनके लिए स्पेशल पॉइंट उन्होंने क्या बताया? द स्पेशल पॉइंट व्हाट दे गेव हियर इज वेरी क्लियरली डेट ऑफ ज्वाइनिंग. डेट ऑफ व्हाट बेटा? ज्वाइनिंग. टिल द डेट ऑफ signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. चलो बेटा वापस पढ़ो. Come on. What is the line used? Come on, tell me. Date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. Meaning is what? The moment you join the ship, signing off means leaving the ship. बोलते ना sir, signing off. Correct, no friends? That the moment you join the ship, till the date you come out of the ship, you are deemed to be outside India. Even though the ship is roaming in territorial waters. Because practically it is a difficult task to tell exactly when ship has crossed territorial waters. अरे समझ में आ रहा है क्या? So in case of a person leaving India as a member of crew of an foreign bound ship, what they told in the law is date of joining till the date of signing off shall be excluded. Date of joining till the date of signing off shall be what beta? Come on, excluded for calculation of number of days in India. समझ में आ रहा है क्या? Everyone, my dear friends, all of us please speak out. Are we getting clarity on this point, my dear friends? Pakka. 100%.
Sir, what is the line they told in the law? Date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation number of days in India. Are we understanding? Did you understand why this concept has come? The reason this concept has come is practically you cannot tell when exactly ship has crossed territorial waters. Clear, no? For that purpose, what did they say? Date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation number of days in India. Joining means entering the ship. Signing off means leaving the ship. Clear, my dear friends? Everyone. चलो इसके नीचे नोट लिखो एक. Note 1. For persons working as a crew continuous discharge certificate is issued. Continuous discharge certificate is issued. Continuous discharge certificate is issued. So clear, friends? Next point. For above purpose, comma, date of joining for above purpose, comma, date of joining till the date of signing off. Date of joining till the date of signing off. Date of joining till the date of signing off shall be excluded date of joining till date of signing off shall be excluded for calculation of date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. Shall be excluded for calculation of number of days in India. That's it. Clear with this part, everybody? Beta bolo. Come on, what are the basic conditions? We have first one. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Second basic condition. He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. But we are talking about some special cases, and in special cases only first condition is applicable. What is special case 1? Indian citizen leaving India during the previous year for the purpose of employment outside India. Second, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of a foreign bound ship. Now उसका explanation ये है. Clear है बेटा? Everyone sir? बोलो ना बेटा कुछ. सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? तो क्वेश्चन देखो ना बेटा, आंसर भी दिया मैंने बुक में, बट फिर भी देखो एक बार. नथिंग टू राइट, आंसर ऑल्सो आई प्रिंटेड देयर. प्लीज सी दिस. व्हाट इज दैट लाइन स्टार्टिंग पॉइंट? कम ऑन. मिस्टर आनंद इज व्हाट सिटीजन? एक बार इंडियन सिटीजन बोले बेटा स्पेशल केस आ सकता है. अगर इंडियन सिटीजन बोले ही नहीं, हम अज्यूम करेंगे कि इंडियन सिटीजन.
I clearly told you, if question is silent, then don't assume Indian citizen. Clear है ना? देखो, Mr. Anand is an Indian citizen and a member of crew of Singapore bound Indian ship, engaged in carriage of passenger international traffic departing from Chennai port on 6th June 2023. कब जा रहा है ये पोर्ट से? From the following details for 23-24, determine resident status of Anand for assessment year 24. Assuming that his stay in India in last 4 previous years is 400 days. 400 to satisfy कर लिया. Correct, no? But the problem is, he is an Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of an foreign bound ship. Then what will apply is only first condition. 60 and 3:5 will not apply. 60 and 3:5 will not. So this 400 days what they gave to us is irrelevant. This 400 days point what they gave to us in the question is what, my dear friends? Irrelevant. उससे कोई संबंध ही नहीं है अपने को. So getting what I am saying? Everyone, in order to become resident, he must be in India for how many days? 182 days or more. उससे कम है तो नॉन रेजिडेंट है, खत्म कहानी. बराबर है ना? Now see. Date entered into continuous discharge certificate in respect of what? Joining the ship by Anand. When did he join the ship? Next. In respect of signing off, 9th December. When did he join? When did he join? When did he sign off? बराबर है ना बेटा? वो कितना टाइम घूम रहा है वाटर में? How much time it is rotating in water is relevant for us. Date of joining till the date of signing off is what, sir? Excluded for calculating number of days in India. चलो निकालो कैलकुलेटर. 6th जून मतलब जून में कितने दिन इंडिया में नहीं है वो? जून में कितना दिन इंडिया में नहीं है? 25. 6 को भी ऐड करो. 6 को भी इंडिया में नहीं है बोलेंगे ना अपन. सर डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ, सर नॉर्मली क्या सीन है? डेट ऑफ कमिंग, डेट ऑफ लिविंग, बोथ आर इंक्लूडेड. पर ये स्पेशल केस है. ये शिप वाला केस में डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल द डेट ऑफ साइनिंग ऑफ शैल बी एक्सक्लूडेड. अरे समझे क्या? अरे बोलो ना बेटा, कुछ दिमाग में जा रहा है क्या? पक्का बेटा? फ्रेंड्स स्पीक आउट. तो जून में कितने दिन इंडिया में नहीं है वो? 25. जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 9 days. करेक्ट नो? क्या हो बेटा? 8 क्यों आया यार? नॉर्मली 8 लेंगे, बट वी आर नॉट ट्राइंग टू कैलकुलेट हाउ मेनी डेज इज इन इंडिया. दिस इज अ केस ऑफ शिप. शिप की केस में क्या सीन है? डेट ऑफ ज्वाइनिंग टिल डेट ऑफ साइनिंग ऑफ शेल बी एक्सक्लूडेड फॉर कैलकुलेट नंबर ऑफ डेज इन इंडिया. स्पेशल केस है ना यार ये. इतना पीरियड 6th जून से लेके 9th दिसंबर तक हम बोलेंगे कि वो इंडिया में ही नहीं है. अरे समझ रहे क्या मेरी बात? बोलो ना बेटा कुछ. एवरीवन, मैं क्या एग्जांपल दूं यार इसके लिए आपको? हाँ, आई विल गिव एन एग्जांपल. लिसन सर, आपका बैच चालू कब हुआ? 15th of February. But let me tell you, 14th February morning I came here. ठीक है ना? 14th Feb morning I came here. According to my wife, I am not in Hyderabad from 14th only. According to her, I am busy in Pune from 14th only. For her, it doesn't matter whether I start the batch on 15th. For her, it doesn't matter whether I start a batch on 16th. उसको दिमाग में यही चल रहा है कि भाई 14 से नहीं है ये. समझ में आ रहा है क्या? फॉर एग्जाम्पल, एक बार अगर डेट 24 आया, वो बोलती 10 दिन से नहीं है आप हैदराबाद में. मैं बोल 10 दिन का हुआ, 9 दिन हुआ क्लास चालू होके. देन शी विल टेल, वो सब मेरे को संबंध नहीं है. संडे को आप क्लास डे नहीं लिए, दैट इज नॉट माई लुकआउट. When did you start? It's not my lookout. When did you leave? 14th. So date of joining till date of signing off shall be excluded for calculated number of days in Hyderabad. In the same way, date of joining till the date of signing off shall be excluded for calculated number of days in India. अभी गया क्या? एग्जाम्पल कुछ समझा क्या? अरे कैसा कर रहे हो आप लोग? समझे या नहीं?
कितना है टोटल? 180। सीधा रेजिडेंट मत बोलो, रुको, पागल जैसा बिहेव मत करो, थोड़ा सोचो एक बार। ये 187 डेज वो इंडिया में नहीं है, बराबर है ना? पूरे साल में कितना दिन है? 365 में से 187 निकाल दो, 170, उतने दिन वो इंडिया में है, तो भाई साहब बनेंगे नॉन रेसिडेंट। ठीक है ना? अब वो 9 दिसंबर को छोड़ देना, 6 जून को छोड़ देना, एक 3-4 दिन उधर उधर कर दिए, 170 क्या है टोटल? 178, थोड़ा इधर उधर कर दिए, 3-4 दिन गड़बड़ हो जाएगा, वो 182 आ जाएगा। एक बार 182 आ गया, हम बोलेंगे रेसिडेंट। हम रेसिडेंट बोलते ही आंसर खत्म, आंसर जाते ही एक मार्क जाएगा। अगर एक मार्क गया तो 6 महीना फर्क पड़ सकता है, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स नॉट 1 मार्क, इट इज 6 months, very costly 6 months. Juniors will become seniors, seniors will become juniors, classmates will become seniors, and our juniors will become our friends. सिंपल लॉजिक है ना? यहां पे थोड़े लोग ऐसे रहेंगे जिनका फाउंडेशन पहले ही था, पहले कोचिंग में ही आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी मेरा क्लास ले चुके होंगे ऑलरेडी, वैसे भी रहेंगे आपके फ्रेंड्स थोड़े, बराबर है ना? पॉसिबल। तो 6 months इज वेरी कॉस्टली, यू नो दैट वेरी वेल। समझ में आ रहा है क्या? कुछ भी मोटिवेशन बोलते ही सा देखते हैं। आप जो बोल रहे हो सही है सर, पर क्या करें सर? समझ में आ रहा है क्या बेटा? अब बोलो ना यार, क्या है पॉइंट? डेट ऑफ ज्वाइनिंग till the date of signing off shall be excluded for calculation of number of days in India. Correct? No friends? लॉजिक सिंपल है ना यार। सी फॉर एग्जाम्पल यू केम फ्रॉम होम टाउन, 15 तारीख को क्लास चालू हुआ, अगर आपने 10 तारीख को आप पुणे आ गया चेक करने के लिए हॉस्टल ये सब कुछ, मम्मी तो यही बोलेंगे ना 10 को निकल गया मेरा बेटा बेटी। चालू तो 15 से हुआ है, बट उससे संबंध ही नहीं है उनको, उनको तो इतना रिलेवेंट है 10 को चले गया। सेम लॉजिक गवर्नमेंट इज टेलिंग, शिप इज रोटेटिंग इन टेरिटोरियल वाटर्स, बट डजंट मैटर व्हेन यू ज्वाइंड, व्हेन यू लेफ्ट, दैट इज ट्रीटेड एज इफ यू आर नॉट इन इंडिया। इफ दैट पीरियड यू आर नॉट इन इंडिया, टोटल हाउ मेनी डेज इन ईयर? 365, उसमें से कितना दिन नहीं है? 187, तो कितना दिन इंडिया में है? 178, तो आंसर इज नॉन रेसिडेंट। 60 and 365 will not apply because this is covered in special case. अगर ये क्वेश्चन में इंडियन सिटीजन नहीं बोलते थे बेटा, मैं सीधा बोलता था रेसिडेंट, बिकॉज इफ ही इज नॉट इंडियन सिटीजन स्पेशल केस विल नॉट अप्लाई। सेकंड कंडीशन कैन बी सेटिस्फाइड। सेकंड कैसा होगा सर? 60 and 365, 365 का किधर दिए वो? अरे दिए ना यार 400 दिन। समझ रहे हो क्या? इसलिए इसका हेडिंग लिखा अपन स्पेशल केसेस, क्योंकि वो स्पेशल है। क्लियर है क्या दोस्तों? स्पेशल केसेस कितने हो गए? 2, 3 हो गया क्या? दिखाओ तीसरा काले के। हाँ 2, और कितने बाकी है? एग्जैक्टली। अब फर्स्ट 2 पॉइंट में इतना धमाका है, तो थर्ड पॉइंट में और कितना होगा? ब्लॉकबस्टर। एग्जैक्टली, विल सी दैट। क्लियर? रेडी? चलो बढ़े फर्स्ट स्पेशल पॉइंट। इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया, इन एग्जाम डोंट गो एंड राइट LIVING, इट इज LEAVING। दोनों में फर्क है ना बेटा? LI मीन्स लिविंग, LEAVING क्लियर ना? इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। बेटा मेरे को याद है, मेरे को ऐसा क्या देख रहे? ऐसा देख के आंसर बोलते हाँ सही है, पता है मुझे सही है। आप रिवाइज करो यार मेरे साथ। अरे कम से कम आज 15-20 बार बोला ना यार मैं सेम लाइन, फिर भी आप नहीं बोले तो फिर मुश्किल है यार। कम ऑन कम ऑन। विच सेक्शन इज गिविंग बेसिक कंडीशंस? सेक्शन 6(1). स्टूडेंट इज टेलिंग सर एडिशनल में जाएंगे ना? रुको पहले बेसिक तो परफेक्ट होने दो, फिर एडिशनल में जाएंगे, ठीक है ना? गुड, वेरी गुड, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। क्लियर नो एवरीवन? हियर? पक्का? सर बोलो सेकंड कंडीशन क्या है?
इंडियन सिटीजन, बाप रे। सेकेंड बेसिक कंडीशन क्या है? हाँ, थोड़ा अच्छे से बोलना, पूरा लाइन पूरा बोला अच्छे से एक बार। पर्सन, पर्सन मतलब कौन? इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एलएलपी, एओपी, बीओआई, एजेपी, कौन? आप समझ रहे क्या कितना फर्क पड़ता है? आप पर्सन वर्ड लिखेंगे तो पूरा खत्म, पूरा मीनिंग बदल जाएगा दोस्त। कौन बोलेंगे एग्जैक्टली? हाँ, ही मस्ट स्टे इन इंडिया। मैंने तो बोला नहीं स्टे इन इंडिया, पर ठीक है चलेगा, कोई बात नहीं, बोलो। ही मस्ट स्टे इन इंडिया। 60 डेज कब? प्रिसीडिंग ईयर। एक लाइन बोलने में इतना सोचने पड़ रहा है अपने को। द प्रॉब्लम इज व्हाट, यू नो, आई टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम। ही नोज द आंसर, एब्सोल्युटली ही नोज द आंसर, उसको पूरा आंसर आता है, बट वो बोलने को नहीं आ रहा भाई। अब प्रॉब्लम क्या होगा? एग्जाम में जाके अपने को आता है, पर लैंग्वेज अपन लिख नहीं पा रहे, कुछ और लिख रहे, तो उसकी वजह से मीनिंग बदल जाएगा। अपन बोलना चाह रहे कुछ और, पर लिख रहे कुछ और, जिसकी वजह से मार्क्स आएगा कुछ और। दैट मेक्स अ डिफरेंस। That is why I make you write in the class. If I don't make you write in the class and directly we discuss, जितना अभी बोल रहे हैं ना उतना भी नहीं बोलेंगे। समझ रहे आप? बोलो बेटा, बोलो। ठीक है मैडम, यू, या फर्स्ट कंडीशन। हाँ, ओके दोस्त, स्पेशल केस पॉइंट 2। सम स्टूडेंट्स, क्या है सर ये ट्विस्ट अचानक? ऐसे होता है, बहुत बार होता है। अभी ये स्टार्टिंग है, आगे देखो और क्या क्या होता है। मैं ऐसे ही पूछूंगा इंडिविजुअली, नो ग्रुप सिंगिंग। हाँ, ये सब मत करो। बोलो दोस्त। इंडियन सिटीजन, मैडम जी, या फर्स्ट स्पेशल केस। इंडियन सिटीजन लिविंग इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। बढ़िया, लिविंग इंडिया बोले, एम्प्लॉयमेंट बोले, आउटसाइड इंडिया भी बोलना ना। अब लिविंग इंडिया मतलब कब लिव कर रहा है वो, तो मैं ऐसा पूछूं क्या? ऐसा पार्ट्स पार्ट्स में थोड़ी आंसर आता है। यस, हियर लास्ट। यस सर, टेल मी व्हाट इज द सेकंड बेसिक कंडीशन? An individual for at least 60 days during the previous year and or good, continue. क्या है यार, एंड है क्या और है? तुम उसको बोल रहा एंड, नहीं नहीं और क्या यार, कॉन्फिडेंस लाओ यार, कम ऑन यार। व्हाट इज फर्स्ट बेसिक कंडीशन? आप देखो कैसा आएगा आंसर अभी। ही मस्ट बी इन इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ, ग्रुप सिंगिंग में सब एक्सपर्ट्स है क्लास में, क्योंकि दोस्त बोल रहे हैं 182 डेज, हे रुक रहे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। हाँ, प्रीवियस ईयर
चलो यार, come on, what is the first condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. Or second condition, he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years preceding the previous year. कम से कम 20 बार रिवाइज किया मैंने तो आज, सच्ची बोल रहा हूं. क्लियर ना? हमारे स्पेशल केस आर देयर. स्पेशल केसेस में क्या होगा? ओनली फर्स्ट कंडीशन विल अप्लाई. क्या है वो फर्स्ट कंडीशन? इंडियन सिटीजन. He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year. अरे इंडियन सिटीजन स्पेशल केसेस में आता है यार, बेसिक कंडीशन में इंडियन सिटीजन को कहां से लाया यार आप? अरे दोनों को मिक्स कर देते क्या यार? स्पेशल केस कितने? 3. और तीनों स्पेशल केस में क्या होगा? Only first basic condition will apply. That means you will become resident only if you satisfy first basic condition. That is 182 days or more during the previous year. बराबर है ना बेटा? बोलो. What is first special case? Indian citizen leaving India during the previous year, as during the previous year for the purpose of employment outside India. वापस बोलो. For the purpose of employment outside India. Second special case, Indian citizen leaving India during the previous year as a member of crew of foreign bound ship. As a member of crew of foreign bound ship. First wala point, for the purpose of employment outside India. और फर्स्ट केस में सेकंड केस में कॉमन पॉइंट है, 2 कॉमन पॉइंट्स है. एक तो इंडियन सिटीजन, दूसरा लीविंग इंडिया, तीसरा ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. क्लियर नो? एवरी वन सर. चल दोस्तों अभी बोलना. ठीक है, कोई नहीं, चलो बोल. हाँ ठीक है. 60 days कब? 60 days कब? ओके. That's it. Good. अभी आया ना आंसर. चलो बोलो बेटा वापस. लास्ट टाइम हाउ मेनी बेसिक कंडीशंस आर देयर? 2. दोनों में से कौन सा सेटिस्फाई करना है रेजिडेंट बनने के लिए? दोनों किए तो भी चलेगा, एक किया तो भी चलेगा, दोनों भी नहीं किए तो? अब 1-2 स्टूडेंट्स का फीलिंग है दोनों भी नहीं किए तो अच्छा है, नॉन रेजिडेंट बनता. इतना सब याद करने की जरूरत ही नहीं है. Come on here. What is first basic condition? He must be in India for a period of 182 days or more during the previous year, or he must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 365 days or more during the 4 years. Excellent. Clear, no? Special cases, how many are there? In special cases, what will happen? Only the first basic condition. बराबर है ना? That 182 days or more हुआ तो रेसिडेंट है, नहीं तो नॉन रेसिडेंट है. 60 एंड 365 की तरफ देखना ही नहीं है अपने को, वो 3 स्पेशल केसेस में. बराबर है ना? कितना परफेक्ट हो गया अभी तक अपन? स्पेशल केस कितना हो गया अभी तक? 2. थर्ड वाला भी करेंगे, परफेक्ट हो जाएंगे अभी आज के दिन. उसको वी विल स्क्वीज एंड टेक द कॉन्सेप्ट इन ब्रेन. ठीक है ना सर? दैट इज हाउ वी शुड बिकम परफेक्ट. सर आई एम नॉट जोकिंग, आई माइट साउंड थोड़ा ड्रामेटिक समटाइम्स व्हेन आई टेल, बट आई रियली मीन इट. व्हेन वी लर्न द कॉन्सेप्ट को भी डर लगना चाहिए, भाई ये पागल किधर से आया ऐसा पढ़ रहा है बोल के. like that we have to study, like a mad fellow we have to study. When we enjoy also we have to enjoy like mad fellow. मैं clear बताया मैंने आपको. Clear no? Simple. When I go out with my friends, I will dance like a mad fellow only. लोग पागल समझते हैं, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. Become उसके लिए नहीं नाच रहा. I am dancing for my happiness. बराबर है ना? Simple. In the same way when you study, you have to study for your benefit. You should enjoy that. You should love that process. Then you will enjoy it. अपन 10 बार दिमाग को बोलते जा रहे क्या हो रहा है यार, खत्म. Half motivation is down because you have to tell you the point is very clear, sir. Tiredness
tiredness is always for the body, not for the brain. Brain can never get tired. It's only our body which will get tired. And body will send a message to the brain. तू ज्यादा मत सोच, तू दिमाग को बंद कर, तू ज्यादा दिमाग मत चला, तेरे पास है ही थोड़ा, कम यूज कर. अपन वो मैसेजेस सेंड करते दिमाग को. बट ये ऐसा नहीं है, ये बहुत शार्प है. क्लियर है क्या बेटा? एवरीवन? ठीक है, आज बहुत ही मोटिवेशन दे रहा हूं मैं. क्या बोलता मैं? स्पेशल केसेस. 2 पॉइंट हो गए. 3rd पॉइंट चालू करें क्या? हाँ, उससे पहले फर्स्ट 2 पॉइंट वापस रिवाइज करेंगे. बोलो. इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया. सेकंड पॉइंट, इंडियन सिटीजन लीविंग इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर एज ए मेंबर ऑफ क्रू ऑफ फॉरेन बाउंड शिप. सर क्लियर है क्या? सबको समझ में आ रहा है क्या? Done. Now let's look at the last point with which we will complete the residential status of individual. Basic condition, that too. Additional अभी बाकी है मेरा दोस्त, बट वो इतना टाइम नहीं लगेगा, वो आराम से हो जाएगा, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है एवरीवन? रेडी? चलो. व्हाट इज द 3rd पॉइंट? लिखो मत, रुको जरा. हाँ, सबर करो, रुको. व्हाट इज द 3rd पॉइंट? इंडियन सिटीजन. फर्स्ट पॉइंट में क्या था? इंडियन सिटीजन. सेकंड पॉइंट में क्या था? 3rd पॉइंट में भी क्या है? हु विल टेल यू while writing exam that is an Indian citizen? Question will tell. If question is silent, then don't assume that he is an Indian citizen. Correct? No? In the question, whatever name they give, they are not our children, right? To tell that they are Indian citizen. अपने को नहीं पता तो नहीं पता. हमको ये नहीं बोलना है. Assume करेंगे Indian citizen. तेरे को बड़ा पता है. Clear है ना बेटा? सर ये instruction मैंने बोल रहा हूँ. ICA only clearly told that don't assume he is an Indian citizen. We will specify that is an Indian citizen. Clear है ना? Indian citizen or what is that word, sir? or a person of Indian origin. ये वर्ड आया नहीं. फर्स्ट पॉइंट में भी नहीं आया, सेकंड पॉइंट में भी नहीं आया, बट 3rd पॉइंट में ये पॉइंट आ गया. और ए पर्सन ऑफ व्हाट बेटा? इंडियन ऑरिजिन. नाउ हु इज अ पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन? वो खुद या मम्मी पापा या पापा की पापा, पापा की मम्मी, मम्मी की मम्मी, मम्मी की पापा. समझे ना? ही और पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स. अरे ये साइड के ग्रैंड पेरेंट्स, ये साइड की ग्रैंड पेरेंट्स. एनी वन ऑफ देम, दोनों नहीं, मतलब दोनों कवर्ड है. एनी वन ऑफ देम इज बॉर्न इन इंडिया. क्या बॉर्न इन वेयर? अनडिवाइडेड इंडिया. क्या हुआ यार? क्या जोक था? बॉर्न इन वेयर? अखंड भारत. अब बोलो माहिष्मती किंगडम में. कटप्पा लेके आओ. Come on, what is the answer? Who is born in where? Undivided India. He or his parents. मत बोलो यार. Any of his parents. अरे imagine करो, father is born before independence, mother is born after independence. अरे possible है ना यार? अरे फादर और मदर की बात करें यार, अपनी बात नहीं कर रहे यार. अपन तो एक ही बार आएंगे. Sir, I'm telling this because no joke, but there is a logic here. Why? Because in exam, one time question has come. Grandfather was born after independence. Grandmother was born in undivided India. Is he Indian origin? Yes. Grandmother या grandfather कोई भी चलेगा ना यार. Both किधर बोले यार? Sir, if you tell parents, it will cover both. Any matlab, any. Clear, no? Now, when do you call a person as Indian origin? If he or any of his parents or any of his grandparents were born in undivided India. Undivided India means before independence. When did we get independence? Are you sure? Which month?
15th ऑफ अगस्त. वंडरफुल. छुट्टी है सर हमको इसलिए पता है. ठीक है. क्या बोल 26 जन बोल रहा है क्या वो? क्या कर रहे? 26 जन क्या है? रुको रुको सर एक बार शुभम का टैलेंट टेस्ट करते. बोलना शुभम 26 जन को क्या है? रिपब्लिक डे. क्या होता है उस दिन? फ्लैग होस्टिंग होता है. और स्कूल में चॉकलेट देते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है. कौन लेके आया था कॉन्स्टिट्यूशन को? B.R. अम्बेडकर. ठीक है. गुड. आ जाओ वापस आ जाओ यार. छोड़ो यार वो सब. चलो आ जाओ वापस इधर. क्लियर नो? व्हाट इज थर्ड पॉइंट? कम ऑन. इंडियन सिटीजन or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. बराबर है ना बेटा? अब देखो सीन क्या है, स्पेशल पॉइंट क्या है. केयरफुली लिसन. हाउ यू हैव टू लिसन? गुड. सुनो अभी. इंडियन सिटीजन or a person of Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during the previous year. चलो वापस बोलो बेटा, क्या लिखा मैंने? Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. क्या हो गया भाई? What was that? रुकना भाई. Come on, see that. Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. Is this a special case? Is a special case. Why am I calling it special case? Because this guy will be resident only if he satisfies first basic condition. बोलो ना यार. Everyone. Now look at the story. Listen very clearly. Please concentrate. If he is in India for greater than or equal to 182 days, what do we call him, beta? Resident. If he is in India for 182 days or more, I repeat once again, if he is in India for how many days, sir? If he is in India for 182 days or more, then we'll definitely call him as resident. Correct, no? Everybody, sir? All of us? But there is one more special point. What is that one more special point? Listen. This guy's total income other than, come on, listen to my point very, very clearly. Total income other than foreign sources. What is that line, sir? Total income. वापस बोल रहा बेटा मैंने, सुनो ध्यान से. Total income other than foreign sources is does not exceed 15 lakhs. Does not exceed 15 lakhs. Does not exceed. And we're talking about both cases where first basic
is not satisfied. करेक्ट नो फ्रेंड्स? सर अगर बेसिक सेटिस्फाई हो गया तो कुछ बात करने की जरूरत ही नहीं है ना यार. फ्रेंड्स समझ रहे क्या आप मेरी बात? अगर फर्स्ट बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो कुछ और बात करने की जरूरत ही नहीं है. सीधा का सीधा वो क्या बनेगा? रेसिडेंट. फ्रेंड्स प्लीज लिसन, थोड़ा सा हटके कॉन्सेप्ट है, प्लीज लिसन. थोड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज केयरफुली लिसन. सर इफ फर्स्ट बेसिक कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ही इज एनीवेज अ रेसिडेंट. But if first basic condition is not satisfied, then we have a special point. What is special point? Total income other than foreign sources does not exceed what beta? 15 lakhs. Then we'll call him as a non-resident. Story is over. We'll call him as what, sir? Non-resident, and story is over. But look at one special case. That is first basic condition not satisfied. First basic condition not satisfied. And his total income other than foreign sources is greater than 15 lakhs. Total income other than what beta? Foreign sources. वापस बोल रहा बेटा, ध्यान से सुन लो प्लीज. Come on. Total income other than दिख रहा क्या आपको? Come on, please speak out. If total income other than what beta? Foreign sources is greater than, then we will look at something called second modified basic condition. What is that line, sir? Second modified basic condition. What is second condition actually? He must be in India for a period of 60 days or more during the previous year and 3 to 5 days or more during 4 years preceding the previous year. इन्होंने क्या बोला? Second modified basic condition is greater than or equal to 120 days in previous year and greater or equal to 365 days in 4 years preceding the previous year. In simple terms to tell you that 60 has become 120. 60 has become 120. समझ में आ रहा है क्या बेटा? That 60 has become 120. Sir, now forget the board. Just leave it. Okay? Just leave it for 1 minute. Listen to what I am telling. Just to focus on what I am telling. सिर्फ मेरे पे ध्यान दो अभी. Sir, I'll repeat once again. There are 2 basic conditions normally for an individual. If any one basic condition is satisfied, we'll treat them as resident. Both are satisfied, still they are resident. Both not satisfied, we'll treat them as non-resident. That is a general story which we have understood. That 2 conditions are 182 days or more in previous year, or second possibility is 60 days or more in previous year and 3 to 5 days or more during the 4 years preceding the previous year. This is a story. Anyone satisfied? Resident. Both satisfied? Resident. Both are gone? Non-resident. यहाँ तक सबको clear है? Done. That is the basic story. Other than this basic story, we have got 3 special cases. I repeat once again, we have got 3 special cases where only first basic condition is applicable. मतलब वो तीनों cases में a person will become, an individual will become a resident only if he satisfies the first basic condition. And the 3 special cases are, first one, Indian citizen leaving India during previous year for the purpose of employment outside India. Second point, Indian citizen leaving India during previous year as a member of crew of a foreign bound ship. Now comes the real game. The real game is the third point. The third point says Indian citizen or a person of Indian origin. Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India. वापस बोल रहा बेटा, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for a visit during previous year. And this third category of person, if he satisfies 182 days condition, he is a resident. Picture खत्म.
182 satisfy nahi hua, the next question mark comes. The next question mark is his total income more than 15 lakhs? Does not exceed 15 lakh. If it is not more than 15 lakhs, he is a non-resident. Story is over. But if it is more than 15 lakhs, we'll apply next special case called second modified basic condition. That is 120 days and 365 days. That means this is a special point in special case. समझे क्या बेटा? Everyone sir? बेटा बोलो ना यार प्लीज. समझ में आ रहा है कि आपको दिमाग में जा रहा है क्या ये चीज? पक्का बेटा बोलो ना यार. Everyone sir? एक छोटू सा एग्जाम्पल लेते बेटा, उससे अपने को ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगा. ठीक है ना? एवरीवन सुनो अभी बेटा, सुनो प्लीज. देयर इज वन पर्सन मिस्टर जेड हु इज एन इंडियन सिटीजन. हैज कम टू इंडिया for a visit on 5th August 2023 and left on 10th Jan 2024. ठीक है ना बेटा? दोस्तों 4 years prior to previous year, 4 years prior to previous year, he is in India for 100 days every year. How many days is in India बेटा? 100 days every year. सर केस समझ में आ रहा है क्या आपको? 100 days every year. हर साल इंडिया में 4 साल से हर साल इंडिया में 100 दिन है. दोस्तों क्लियर है क्या? Everybody my dear friends? Now determine residential status for assessment year 24-25. First case, सुनो पहले. First case, total income other than what beta? Foreign sources is equal to 13 lakhs. Second case, total income other than बेटा बोलो ना प्लीज इज इक्वल टू 16 लाख. क्वेश्चन समझा क्या सबको? पक्का ना बेटा बोलो ना बेटा प्लीज. So please, I'm trying my best to give the best. So please, come on my dear friends, let me give you the best. Tell me guys, when did he come to India? 5th August 23. First of all, क्वेश्चन पढ़ने के बाद सबसे पहले दोस्त शुभम सुनना प्लीज. द मोमेंट यू रीड द क्वेश्चन, फर्स्ट अवर ब्रेन शुड टेल वेदर स्पेशल केस विल कम और नॉट कम. सबसे पहले अपने को वो सोचना है, क्योंकि अगर स्पेशल केस नहीं आया तो 182 भी हो सकता है, 62 और 365 भी हो सकता है. तो जब भी आज के बाद एनी टाइम वी सॉल्व ए प्रॉब्लम, योर ब्रेन शुड फर्स्ट थिंक स्पेशल केस आएगा या नहीं आएगा. अब मुझे बोलो, ही इज एन इंडियन सिटीजन, ही हैज कम टू इंडिया on 5th August and left India on 10th Jan. वो आया और गया. That means he has come to India for a visit. Did he come during previous year? Yes. Did he come for a visit? Yes. Is he an Indian citizen? Yes. Will special case apply? और एक बार स्पेशल केस आ गया, अगर एक बार स्पेशल केस आएगा तो क्या करना बेटा? अपने को क्या देखना है? बोलो बोलो यार. 182 डेज और देखना है अपने को. 69 रिस्ट पे तो आ ही नहीं सकता. बोलो. आप मुझे बोलो, ये प्रीवियस ईयर में ये भाई साहब कितना दिन है इंडिया में? 159. पक्का वही है क्या सबका आंसर? एवरीवन 5th August 23 को आया और 10th Jan 24 को चले गया. दोस्तों एवरीवन, अगस्त में कितना दिन है ये? 27 डेज. 27 plus 30 plus 31 plus 30 plus 31 plus 10, 150. Pakka? So previous year he is in India for 159 days.
Now when you got a conclusion, I repeat once again, when you got a conclusion that is in India for 159 days, ये इससे बहुत क्लियर है अपने को ये 182 डेज सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इससे बहुत क्लियर है ये 182 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है. आप मुझे बोलो अभी जब 182 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो 182 सेटिस्फाई करके रेजिडेंट तो बनने वाला तो है नहीं है. बट स्पेशल केस में भी एक स्पेशल पॉइंट है. स्पेशल केस का भी स्पेशल पॉइंट क्या बोलता है? इफ ही इज सेटिस्फाइंग सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन वी विल कॉल हिम एज रेसिडेंट. बराबर है ना? एंड द स्टोरी of second modified basic condition will come only if total income other than foreign sources is more than 15 lakhs. First case में he will become non-resident. Second case में he will become resident because he can satisfy second modified basic condition. And the second modified basic condition is 120 days or more during previous year. जो वो satisfy कर रहा है 159 days बोल के, correct है ना बेटा? And 3 to 5 days or more during last 4 years. And every year he is there for how many days in India? 100 days every year in India. 100 days every year means 4 years, 400 days. So he can definitely satisfy second modified basic condition. You may get one doubt, sir, second modified basic वाला कहानी first point में क्यों नहीं आया? गवर्नमेंट इज टेलिंग वेरी क्लियरली सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन वाला कहानी तब भी आएगा अगर टोटल इनकम आपका 15 लाख के ऊपर हो. इनडायरेक्टली व्हाट गवर्नमेंट इज टेलिंग इज दैट इफ टोटल इनकम इज लेस देन 15 लाख, तू छोटा आदमी है रे भाई, तू जा, तू नॉन रेजिडेंट है, निकल इधर से. अगर तेरा टोटल इनकम 15 लाख के ऊपर है, भाई मिला अपने को एक बकरा, पकड़ो इसको और बोलो इसको 120 डेज 365 डेज 120 सेटिस्फाई किया, लेके आओ उसको और भरो टैक्स. क्योंकि आपको सुबह बताया मैंने आपको, अगर वो बंदा रेजिडेंट बना वो जिधर भी जाएगा उसका टैक्स लगाएंगे अपन. अगर वो नॉन रेजिडेंट बना जितना इंडिया में कमाए उतना टैक्स भरेंगे, बाहर का तो छोड़ ही देंगे अपन. Are we getting clarity on this point, everybody? Sir, very, very important, man. Very important. And unless we get that level of clarity, we really will not become perfect in this. That's why I have taken this time. सबको समझ आ रहा है क्या? Undoubtedly, my dear friends. Sure, sir. थर्ड स्पेशल केस समझ में आया क्या? स्पेशल केस में भी स्पेशल पॉइंट समझा क्या? स्पेशल केस में स्पेशल पॉइंट कब आएगा? पहली बात, नहीं उससे पहले स्पेशल केस का स्पेशल पॉइंट आएगा अगर आप 182 सेटिस्फाई नहीं करे तो मतलब फर्स्ट सबसे पहले चेक करना है थर्ड स्पेशल केस में आ रहा है क्या? हाँ. नेक्स्ट 182 सेटिस्फाई हुआ क्या? हाँ तो रेजिडेंट. नहीं हुआ क्या? फिर चेक करो टोटल इनकम कितना है. टोटल इनकम 15 के नीचे है तो बोल दो उसको नॉन रेजिडेंट. टोटल इनकम 15 के ऊपर है फिर चेक करो सेकेंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन, वो सेटिस्फाई हुआ तो रेजिडेंट, नहीं हुआ तो नॉन रेजिडेंट. आई थिंक वी आर क्लियर. गवर्नमेंट के पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है ये लाने के लिए. द लॉजिक यू माइट थिंक सर इतना ऐसा क्यों कर दिया इन्होंने. द लॉजिक सिंपल है सर. बहुत सारे लोग इंडिया में ऐसे है जो दुबई जाते आते रहते आ रहे जा रहे उनका काम यही है. दे आर कमिंग गोइंग हैविंग बिजनेस देयर आल्सो हियर आल्सो एंड दे आर इंडियन सिटीजन ओनली. इंडिया का बंदा है, यूएस में, यूके में, दुबई में कहीं तो बिजनेस सेटअप किया वो जा रहा है, वो इंडियन सिटीजन है. कमिंग टू इंडिया फॉर व्हाट पर्पस? विजिट. और ये लोग कितने बदमाश लोग निकले, सॉरी ये लोग कितना डेंजर निकले. सब लोग क्या करने वालों, अक्टूबर 1 या 30 सितंबर या 2 अक्टूबर को भाग जा रहे इंडिया से. क्यों? अक्टूबर 2 को अगर इंडिया से भाग रहा है वो 182 सेटिस्फाई नहीं कर सकता. 365 डेज है ना ईयर में. वो अक्टूबर 2 को, अक्टूबर 1 को या 30 सितंबर को भाग रहा है ना, देन ही विल नॉट सर्व 182, ही विल बिकम 181 और 180. और अगर एक बार 180 या 181 हो गया वो क्या बनेगा? नॉन रेजिडेंट. फिर क्या बोलेगा? मैं जो फॉरेन में कमा रहा हूं तेरे को कोई हिम्मत नहीं पकड़ने के लिए, चप्पल लेके मारूंगा मेरा फॉरेन की इनकम को हाथ लगाए तो. इंडिया में जो कमा रहा ना उस पर बढ़ता. तो फॉरेन का देख भी मत मेरे तरफ, मैं नॉन रेजिडेंट हूं. गवर्नमेंट बोल रहा है अच्छा बेटा तेरा इनकम क्या है बता. वो बोल रहा है मेरा क्या इनकम है 7-8 लाख रुपए. 7-8 लाख रुपए, चल फुट निकल, नॉन रेजिडेंट जा. गवर्नमेंट पूछा तेरा इनकम कितना है? बोल रहा है 25 लाख. हाँ
25 लाख, 15 लाख के ऊपर है, तू इधर आ, जा मत, तू बात मत, रुक मेरी बात, मैं तेरे लिए और एक पॉइंट बोलूंगा, मैं रुक जा, आधा इधर आ, तू बैठ। कितना इनकम है तेरा? 15 लाख के ऊपर है। अब तू बता इंडिया में कितना दिन है? 181 नॉन रेसिडेंट। मेरे भाई तू 181 नॉन रेसिडेंट नहीं है, तू रेसिडेंट है। बिकॉज फॉर यू वी हैव वन स्पेशल केस कॉल्ड सेकंड मॉडिफाइड बेसिक कंडीशन। You got the logic? Why they brought this story? You understood? Because people are trying to play games. Correct, no? And player cannot teach the coach how to play. Correct, no? Income tax assessors are players. Income tax department is a coach. Player coach के सामने नाटक करेगा तो कोच भी दिखाएगा ना अपना टैलेंट। उसके पास एक बड़ा पावर है, बजट, फाइनेंस बिल, फाइनेंस एक्ट, लाएंगे अमेंडमेंट। आप बोल सकते हैं अभी सर अगर आगे फ्यूचर में गवर्नमेंट को दिख रहा है कि सब लोग 119 डेज को चले जा रहे, 119 डेज ही रुक रहे इंडिया में, 118 डेज ही रुक रहे, जानबूझ के नॉन रेसिडेंट बनने की कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट को ऐसा पता चला, गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि बहुत नाटक कर रहे हैं लोग, वो 120 को निकाल के 90 करेंगे। उनके हाथ में है ना बेटा, हर साल फरवरी 1 को लाएंगे ना बजट, लोकसभा, राज्यसभा, फाइनेंस बिल, साइंड बाय प्रेसिडेंट, फाइनेंस एक्ट। If we are trying to find the loopholes in the law, play with the loopholes, you can play only for some time. After that, amendments will come. Amendments will come the day when government gets to know. Clear, no friends? Everyone, सबको समझ में आ रहा है क्या बेटा? मजा है क्या ये पॉइंट? सुपर्ब है? श्योर? चलो, let's close. टाइम है अपने पास, चलो। अब लिखे नहीं ना थर्ड पॉइंट ये? लिखो, इंडियन सिटीजन, Indian citizen or a person of Indian citizen or a person of Indian origin Indian citizen or person of Indian origin who comes to India, Indian citizen or a person of Indian origin who comes to India for the purpose of visit during the previous year. Clear, my dear friends, everybody? दोस्तों बोलो. Note, person of Indian origin means he or any of his parents he or any of his parents or any of his grandparents, he or any of his parents or any of his what beta grandparents were born in undivided India. Were born in undivided India. Bracket, grandparents cover both maternal and paternal. ठीक है ना बेटा? दोस्तों क्लियर है? सर मुझे एक बात बोलो ना, लास्ट एक ये बोल दो एक बार जवाब। सर 159 डेज है ना ये? सर अगर 159 की जगह 189 होता, 189, तो फर्स्ट केस में आंसर क्या होगा? रेसिडेंट। सेकंड केस में आंसर क्या होगा?
रेसिडेंट. 15 लाख का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं पिक्चर में. अगर 182 सेटिस्फाई किए तो खत्म कहानी, रेसिडेंट ही बनेंगे. 182 सेटिस्फाई नहीं करे तब जाके स्पेशल पॉइंट आएगा. करेक्ट नो? चलो बिलो दैट टेक दिस टेबल. काइंडली प्लीज कोऑपरेट. 5 मिनट. The 120 days story will come only when 182 is not satisfied. And that too only when total income other than foreign source is more than 15 lakhs. Okay, beta? Just give 1 more minute, please. Just 1 minute. हो गया ना? एक एग्जाम्पल लिखना है प्लीज. लेट दिस एग्जाम्पल बी इन योर बुक. मतलब ये लेफ्ट आउट हो जाएगा थोड़ा सा कल के लिए, फिर मतलब बीच में लिंक चले जाएगा. एक एग्जाम्पल लिख दो बस, खत्म. That's it. एग्जाम्पल लिख के क्लोज कर दो. Thank you so very much for your kind cooperation, guys. Thank you. And we are done with the basic conditions for individual. We still have some special points to talk that we'll talk in detail tomorrow. Clear? Thank you so much. Take care. Have a great, wonderful day. Thank you. Bye-bye.